alaikum, good evening and welcome to Rangan Bhari Shaam with me, Kiran Mir. कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां आहियो? ऐं अॼु जेको आहे असां पंहिंजो आज़ादी वीक सेलिब्रेट करणु स्टार्ट करे छॾियो आहे। यकीननि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त मां ग्रीन ड्रेस पातो आहे ऐं वरी मां बैज बि हयो आहे पाकिस्तानी झंडे जो। त इन जे करे जो आज़ादी हिकु नेमत आहे ऐं ज़ाहिर आहे इन खे एक्सप्रेस करणु घुरिजे, इन खे फील करणु घुरिजे। जॾहिं बि ऑगस्ट जो महीनो ईंदो आहे त मां तव्हांखे पहिरियां बि इहा ॻाल्हि करे चुकी आहियां त हिकिड़ी अलॻि ई फीलिंग ईंदी आहे। आज़ादी जी हिकिड़ी जेको आहे न ख़ुशबू ईंदी आहे, हिकिड़ी सुठी शइ महसूसु थींदी आहे त हा ही आज़ादी जो महीनो आहे, आज़ादु फ़िज़ा में साहु खणूं था, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहियूं। त इहो हक़ु सिर्फ़ु असांजो न आहे, इहो हर इंसान जो हक़ु आहे। कल्ह जीअं असां योम इस्तिहसाल जो शो कयोसीं त उन में बि असां कश्मीर भाइरनि भेनरुनि जे हवाले सां इहा ई ॻाल्हि कईसीं त उन्हनि जो बि हक़ु आहे त उहो बि खुली फ़िज़ा में आज़ादी सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारनि ऐं उन्हनि खे इहो राइट आहे, बाक़ाइदा उन्हनि खे इहो राइट आहे। पर इहा शइ महसूसु करण वारी आहे जेका हू उते रही करे महसूसु करणु चाहिनि था, जेका उन्हनि खे महसूसु करणु नथी ॾिनी वञे। पर जेकॾहिं असां हिते आज़ादु मुल्क में ॼावा आहियूं, रहूं था, त असांजो इहो फ़र्ज़ु आहे त इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी बि आहे त असांखे पंहिंजे मुल्क सां वफ़ा करणी आहे ऐं हमेशह हमेशह पंहिंजे मुल्क सां ईमानदार रहणो आहे। हिते मां ॾिसंदी आहियां त असांजा जेके बि पेरेंट्स थी विया उहे पंहिंजे ॿारनि खे इहा ई शइ सेखारींदा आहिनि, पढ़ी करे ॿाहिरि वञो, हिते तव्हांजो फ्यूचर न आहे, तव्हां हलिया वञो ॿाहिरि। ॿारनि खे मोकिले छॾींदा आहिनि, पोयां कुझु टाइम खां पोइ पाण बि जेको आहे शिफ्ट थी वेंदा आहिनि। जॾहिं असां हिन मुल्क में रहंदासीं, पंहिंजे ॿारनि खे पढ़ाईंदासीं, हिन मुल्क खे सर्व कंदासीं त छो न ही मुल्क तरक़ी कंदो। जॾहिं असां पंहिंजे ॿारनि खे इहो ई सेखारींदासीं त वञो, हलिया वञो, हिते तव्हांजो फ्यूचर न आहे, हिते तव्हांखे जॉब्स न मिलंदियूं, असां छो था डिग्रेड कयूं? तव्हांखे पाण खे ख़बर आहे त ॿाहिरियुनि मुल्कनि में ज़िंदगी केॾी मुश्किल आहे। असांखे हिते हर नेमत आहे अलाह जी, त इन जे करे मां चवंदी आहियां त पंहिंजे ॿारनि खे बि एजुकेट कयो ऐं स्पेशली जेके पेरेंट्स आहिनि, तव्हां प्लीज़ इन शइ खे सम्झो। तव्हां उहो वक़्तु ॾिठो, आज़ादी वारो वक़्तु ॾिठो, तव्हांजे वॾनि ॾिठो, तव्हांखे आज़ादी उहा मिली, उहो हिकु वक़्तु जी ॻाल्हि हूंदी आहे। जॾहिं हींअर थोरो ॾुखियो वक़्तु आहे त इनशाला हिन वक़्त खे बि मोह ॾींदासीं, निकिरी ईंदासीं हिन वक़्त खां बि ॿाहिरि। मुश्किलातूं ज़िंदगी में ईंदियूं आहिनि, अप्स एंड डाउन्स ईंदा आहिनि ज़िंदगी में, पर इन सां जेको आहे तव्हां इहो न सोचो त बसि ज़िंदगी हिते ख़तमु थी वई। सिखबो आहे, हर शइ मां सिखबो आहे, पंहिंजी ग़लतियुनि मां, पंहिंजी कोताहियुनि मां, परेशानियुनि मां इंसानु सिखंदो आहे ऐं उन्हनि खे दुरुस्त करण जी कोशिशि कंदो आहे। असां सिर्फ़ु हुक्मराननि खे नथा चई सघूं, असांखे पंहिंजो पाण खे बि सही करिणो आहे। बीइंग जेको आहे पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन, असांखे पंहिंजो इंसानी हिकिड़ो किरदारु बि अदा करिणो आहे, पाड़ेसिरी जो किरदारु बि अदा करिणो आहे, असांखे हिकु सुठो पाकिस्तानी हुजण जो फ़र्ज़ु बि अदा करिणो आहे। असां सिर्फ़ु पंहिंजे हुक्मराननि खे या पंहिंजे ॿियनि माण्हुनि खे नथा चई सघूं। असां पहिरियां पाण ठीकु कंदासीं, उन खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता शयूं बहितर थींदियूं वेंदियूं। हिन साल असां 79th जश्न आज़ादी मल्हाईंदासीं 14 ऑगस्ट ते इनशाअल्लाह, ऐं इन हवाले सां बि असां पंहिंजे गेस्ट सां ॻाल्हाईंदासीं त आज़ादी उन्हनि जे लाइ छा आहे। बिल्कुलु हिकु नेमत खां घटि न आहे, पर उन्हनि जा एक्सप्रेशन्स, उन्हनि जी फीलिंग्स, उन्हनि जा लफ़्ज़ ॿुधंदासीं त छा आहे। ऐं तव्हांखे बि इहो ज़रूरु चवणु चाहींदसि त आज़ादी वीक असां सेलिब्रेट करे रहिया आहियूं, त तव्हां बि तयारियूं कयो पंहिंजी ऐं आज़ादी खे मल्हायो ऐं मल्हाइण जी कोशिशि कयो। ऐं गॾोगॾु इहो बि चवणु चाहींदसि त असांजे KTN जो हिकिड़ो तमामु वॾो नालो नज़ीर लगारी साहब, जेके अॼु हिन दुनिया में न आहिनि, अॼु उन्हनि जी 19वीं वरसी आहे ऐं असां त उन्हनि खे ख़ैर ड्रामनि में ॾिठो, तमामु बहितरीनु स्टेज आर्टिस्ट बि रहिया, KTN जा वॾा वॾा प्रोजेक्ट्स कयनि ऐं मूंखे इहा बिल्कुलु बि ख़बर न हुई त हू पाण एज़
ASI जेको आहे पुलिस डिपार्टमेंट में हुया ऐं जंहिं ॾींहुं पत्थर दुनिया ड्रामे जी क़िस्त में उन्हनि खे मारियो वियो या उन्हनि जो जेको हिकिड़ो चैप्टर उन में ख़तमु कयो वियो उन ई राति कराची में जेको आहे दहशतगर्दनि सां मुक़ाबले में हू शहीद थिया। सो कल्ह असां पंहिंजे शोहदा खे भेटा ॾिनी ऐं अॼु मां वरी ॿीहर उन्हनि खे बि भेटा पेश करणु चाहींदसि छो त ॾिसो इहे उहे नौजवान बहादुर आहिनि जेके पंहिंजे फ़र्ज़ खे निभाईंदे निभाईंदे शहीद थी था वञनि। मां कल्ह बि इहा ॻाल्हि कई हुई त उहो पंहिंजी फैमिलीज़ खे बि जेको आहे न पोइ ते छॾे ॾींदा आहिनि। हुननि जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु फ़र्ज़ु हूंदो आहे पंहिंजी धरती पंहिंजा जेके शहर में रहंदड़ जेका अवाम आहे उन्हनि जी सेफ्टी उन्हनि जे लाइ वधीक हूंदी आहे। दहशतगर्द जेकॾहिं अचे थो त सभिनि खां पहिरियां हू गोली पंहिंजे सीने ते पाण खाईंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ हू वेंदा आहिनि अॻिते वधंदा आहिनि ऐं हू पंहिंजे ॿियनि माण्हुनि जेके असांजा जेके शहरी जेके आहिनि या जेके ॿिया जेके माण्हू आहिनि उन्हनि ॾे उन्हनि खे वञण बि न ॾींदा आहिनि। त मां अॼु पंहिंजे शो जे ज़रिए KTN 7 जे ज़रिए पंहिंजी टीम जे ज़रिए अॼु मां उन्हनि खे सलाम पेश थी कयां पई त अलाह साईं उन्हनि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे ऐं उन्हनि जी फैमिली खे अलाह साईं सब्र अता करे। उन्हनि जा फ़र्ज़ंद बि हिते मौजूदु आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदमि त नज़ीर लगारी साहिबु सिंधी स्टेज जो तमामु वॾो नालो रहियो आहे ऐं उन्हनि जा कुझु प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके मां तव्हां सां शेयर करणु चाहींदमि। सिंधी स्टेज ते जेके उन्हनि जा ड्रामा थियल आहिनि उन्हनि में आहे दोदा हिन देस जा जाग भिटाई घोट न्याणी निमाणी दहशतगर्द दौलत जा पुॼारी ऐं जीअ लतीफ़ इहे इन्हनि जा बहितरीनु स्टेज ड्रामा आहिनि। सो अलाह साईं उन्हनि खे जेको आहे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे ऐं दुआगो आहियूं उन्हनि जे लाइ। ऐं मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त उन्हनि जा फ़र्ज़ंद हिते मौजूदु आहिनि असां सां गॾु इमरान नज़ीर ऐं जेकी पाण माशाल्लाह सां एक्टर बि आहिनि स्टेज ड्रामा राइटर बि आहिनि ऐं स्टेज बि कंदा रहिया आहिनि ऐं गॾोगॾु पोइट्री बि कनि था। उन्हनि खे भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो भाउ? ठीकु आहियो? उन खां अलावा असां सां गॾु मोहम्मद अली हैदर साहब हिते मौजूदु आहिनि जेके वॉइस चेयरमैन पाकिस्तान LPG मार्केटर्स एसोसिएशन कन्वीनियंस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। उन खां अलावा असां सां गॾु मुर्तज़ा लगारी साहिबु हिते मौजूदु आहिनि जेके राइटर आहिनि मुल्क पब्लिकेशन जा ऑनर बि आहिनि ऐं 7 किताबनि जा मुसन्निफ़ बि आहिनि। उन्हनि खे बि भली कार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो? ठीकु आहियो? राजस्थान फर्स्ट क्लास। तव्हां ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां बि जेको आहे नज़ीर साहिब सां गॾु कमु कयो? जी बिल्कुलु। ही ड्रामे जी जेका हिकिड़ी 90 खां जेको आहे 2000 ताईं 2000 खां 2005 ताईं जेको ड्रामे जो रूज हो उन दौर में शादाब कोट लाड़काणो दादू ॿियनि बि मुख़्तलिफ़ सिंध जे शहरनि में ड्रामनि जी गूंज हुई। तमामु सुठा ड्रामा थींदा हुआ। उन दौर में शादाब कोट हिकु स्टेज जे हवाले सां तमामु वॾो कमु कंदड़ ऐं तमामु सुठा एक्टर राइटर ऐं डायरेक्टर पैदा कया। उन्हनि में सर फ़हरिस्त जेके बि 2 नाला हूंदा उन्हनि में शहीद नज़ीर लगारी साहिबु अहम नालो आहे। नज़ीर लगारी साहिबु न रुगो सुठो एक्टर हो पर तमामु सुठो डायरेक्टर हो, तमामु बहितरीनु कंपेयर हो ऐं सुठो ड्रामा राइटर हो ऐं उनखां अलावा उनमें ॿियूं खोड़ लिखण जूं ख़ूबियूं हुयूं। तमामु वॾी शख़्सियत हो पर उन एज़ अ डायरेक्टर ऐं एज़ अ आर्टिस्ट एज़ अ एक्टर तमामु घणो कमु कयो। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज़ादी वीक हमने आज से स्टार्ट कर लिया है और जश्न आज़ादी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो 79th जश्न आज़ादी इस दफ़ा हम पाकिस्तान में मनाएंगे, तो हमने इन 79 ईयर्स में क्या किया? जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम के, तो मैं आपने मदऊ किया और हम ऐसे नेशन 79th सालगिरह बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की।
تعمیر پاکستان کا جو ایجنڈا ہے وہ آج تک نامکمل ہے. تکمیل پاکستان کا ایجنڈا ہم نے 14 اگست 1947 کو پا لیا تھا, بٹ تعمیر پاکستان کا ایجنڈا جو قائد نے خواب دیکھا تھا وہ اس خواب سے آج ہم بہت دور ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایسے پاکستانی ہم نے, ایسے نیشن ہم نے بہت اچیومنٹس بھی حاصل کی ہیں, مگر اقوام عالم میں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا, جو ہمارا پوٹینشیل ہے, اس حساب سے ہم آج بھی اپنے آپ کو دنیا سے پیچھے دیکھتے ہیں. آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بڑی اچھی بات کی کہ آزادی ایک نعمت ہے, اور ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. بالکل. ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں جو مسلمان جہاں رہ رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں اور کس جبر کے اندر رہ رہے ہیں. اس حساب سے آزادی کی قدر کرنا, اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا, یہ ہم سب کا فرض ہے. اور ایسے پاکستانی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اپنی نئی جو یوتھ ہے ہماری ہے, جن کو انفارچونیٹلی یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا ہے, ان بچوں کو ہمیں بتانا بڑا ضروری ہے, ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ بڑی لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد مرد وجود میں آیا, ایک آئیڈیالوجی کے اوپر بنا. وہ آئیڈیالوجی ہمیں بچوں کو اپنے سکھانے کی ضرورت ہے, اور ہم انفارچونیٹلی ہم اپنے بچوں کو قیادت مقاصد, قیادت پاکستان کے حوالے سے ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن دیکھیں نا, یہاں پہ ایک ٹرینڈ بھی تو چل چکا ہے, الفا, جین زی. یہ جو بچے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی انقلاب لائیں گے؟ دیکھیں, یہ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں جو پاپولیشن کا ڈیموگرافکس ہے, اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے. مطلب ہماری جو سائز ہے پاپولیشن کا, ہم 26 کروڑ کی آبادی ہیں, اور اس میں تقریباً 18 سال سے 32 سال کی عمر کے لوگ 60% ہیں. اب کہ ہم اس ایسٹ کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں پاکستان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں. اب یہ ہمارے اور ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس ایسٹ کو کنورٹ کریں پاکستان کی ترقی کے اندر, نہ کہ یہ بچے غلط راستے پہ چل کے اور بھٹک جائیں اور پھر وہ ایسی لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں جس میں وہ اپنے اقراض و مقاصد سے ہٹ جائیں. انفارچونیٹلی ہم آج آپ دیکھیں, ہم تقریباً کوئی 2.5 کروڑ اسکول گوئنگ بچہ اسکول سے باہر ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے. 35 لاکھ. سندھ کے اندر 80 لاکھ بچہ, پورے پاکستان میں 2.5 کروڑ بچہ. اب دیکھیں, جو ہمارا 1973 کا آئین پاکستان ہے, جو ہمیں فیڈریشن کی صورت میں ایک یونٹ بناتا ہے, اس میں یہ بنیادی حق ہے بچے کا, آرٹیکل 245 ہے, جو ہر بچے کو تعلیم کا مساوی حق دیتا ہے. بالکل. اب یہ 2.5 کروڑ بچہ اگر پڑھ نہیں پائے گا, کوئی ہنر نہیں سیکھ پائے گا, نیشنل مین سٹریم میں نہیں آ پائے گا, تو ہم ان بچوں کو ہم کیا ہم ان بچوں کو ایک بم, ایک عاطفی شاہ مواد بنانے جا رہے ہیں. یہ غلط ہاتھوں میں جائیں گے, یوز ہوں گے, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ملک کے کچھ حصوں میں یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ایسٹ کو کلٹیویٹ کریں, نیشنل اسٹریم لائن میں لے کے آئیں, ان کو تعلیم دیں, ہنر دیں, تاکہ یہ مین اسٹریم کا حصہ بن سکیں. بالکل بالکل بالکل. اساں عمران نذیر بھی تے موجود آئین. کی آयो ٹھیک آयो تبھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل, تھینک یو. چھا چوڻ चाहींदो पंहिंजे बाबा जे हवाले सां? बाबा साईं ज़िंदगीअ खे जेकॾहिं ॾिसिजे त उनजी ज़िंदगी जो ख़ुलासो आर्ट आहे. हूअं त उनजी ज़िंदगी जा मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि. मिसाल तौरु हू हिकिड़ो सुठो क्रिकेटर बि रहियो पंहिंजी लाइफ में, यानी सुठो क्रिकेटर माना सिटी लेवल ते. अच्छा. जी हा. ऐं उन खां अलावा उनजी ज़िंदगी जो हिकिड़ो पासो ज़ाहिर आहे, ज़ाती पासो जेको असां सम्झूं था, उहो हिकिड़ो पुलिस ऑफिसर रहियो. पर हुनजी ज़िंदगी जेका असां नंढपण खां वठी जॾहिं खां हुन शऊर वारे उमिरि में पेर रखियो, तॾहिं खां वठी पंहिंजी ज़िंदगीअ जे आख़िरी ॾींहं ताईं उहो मुकमल आर्ट में वेढ़ियल रहियो, ईअं चई सघूं. छाकाणि त हुन स्कूल वारे ज़माने में ई जेको आहे स्टेज ते पेर रखियो आहे. उहो दौरु आहे जॾहिं विरहाङे खां पोइ, यानी 47 में जेको विरहाङो थिए थो, उन थियो ईअं त असां वटि अक्सरियत जेके अदाकार हुआ उहे हिंदू हुआ, यानी दीवान हुआ. सही सही सही. छो त उहे नाटक मंडलियुनि जी सूरत में उन्हनि जो जेको मज़हबी पस मंज़र हो, उनखे हू बयानु कंदा हुआ पंहिंजे जेको आहे सो नाटक मंडलियुनि जी सूरत में एज़ एन स्टेज. पोइ मंघाराम मलकानी साहिबु हिकिड़ो किताबु लिखियो आहे. उन किताब में उहे ॿुधाइनि था पिया त 47 ताईं जेका तारीख़ मिली आहे, उन में सिर्फ़ु हिकिड़ो यकीन सां ऐं शक में के 2 आर्टिस्ट आहिनि,
जेके सिंधी मुस्लमान हुआ अच्छा 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 सभु होॾां हलिया विया हा 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 असां वटि हिकिड़ो वॾो वैक्यूम पैदा थी वियो उन वैक्यूम खे भरण जे लाइ 50s ऐं 60s में जिन माण्हुनि महिनत कई उन्हनि जेके गुल ॿूटा पोखिया उन्हनि मां ई ॾिसिया हुआ आर्टिस्ट जीअं नज़ीर साहब ऐं कमु जेको आहे इहो सहिरो तव्हां चई सघो था त इहो वञे थो पियो उन वक़्त जे तालीमदाननि खां जेके प्रिंसिपल्स हुआ उन्हनि पंहिंजनि कॉलेजिस में सही, सही, ज़ाहिर पढ़िया ॻढ़िया माण्हू हुआ बाशऊर माण्हू हुआ उन्हनि ॾिठो त आर्ट खे कीअं जेको आहे सो प्रमोट कजे 47 में विरहाङे खां पोइ हिकिड़ी वॾी क्रीम यानी सम्झो त सभु जा सभु आर्टिस्ट ऐं पोइ उहो विरहाङे जो सिर्फ़ु 2-3 सालनि ताईं हिकिड़ी माइग्रेशन रही सम्झो त 55 ताईं 55-56 ताईं माना असां वटि ख़तमु थी चुको हो ॼण हाणे आर्ट न थींदो ड्रामो ख़ासि तौर ते पोइ उन्हनि छा कयो त शागिर्दनि खे तयारु कयो जेके हुन स्कूल्स में ऐं कॉलेजिस में शागिर्द हुआ उन्हनि खे हुन तयारु कयो एज़ एन एक्टर माना हुननि खे टेबलोज़ में पेश करणु हुनजो मक़सदु इहो हो त ड्रामेटिक सोसाइटियूं ठाहे आर्ट खे बचाइजे कंहिं तरीक़े सां पोइ अब्दुल फ़ताह सुमरो साहिबु आहे उस्ताद हूंदा हुआ उहे मरहूम आहिनि हींअर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शादात कोट जा जिन नज़ीर साहिब में इहे गुण ॾिठा त हीउ हिकिड़ो सुठो अदाकार थी सघे थो सही पोइ उन्हनि हुनखे जेको आहे सो ग्रूम कयो उन्हनि खे पॉलिश कयो ऐं पोइ कॉलेज जी जेको आहे सो नंढी स्टेज ते हुनखे आंदाई ऐं उनखां पोइ 1981 में हू भरपूर अंदाज़ में हिकिड़े प्रोफेशनल एक्टर स्टेज ते आयो कुमाणिल कंवल नाले सां हुननि जो पहिरियों स्टेज आहे जेको अहमद अली साबिर चांडे साहिब जो लिखियलु हो ऐं उनखां पोइ मुसलसल स्टेज सां जुड़ी विया अहिड़े अंदाज़ में जुड़िया जो हू पोइ मुकमल स्टेज जा ई थी विया पोइ चवंदा हुआ त स्टेज मुंहिंजी माउ आहे हुन पंहिंजी हुन स्टेज खे पंहिंजी माउ जो दर्जो ॾिनो यानी हिन अथाह दर्जे जो जेको आहे उहो इश्क़ हो स्टेज सां बाबा साईं जो त तव्हांखे बि पंहिंजे बाबा मां ई इंस्पिरेशन मिली जी हा आर्टिस्ट थियण जी हा चई सघो था मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त बाबा साईं न चाहींदो त अच्छा मां स्टेज मूंखे यादि आहे त मूं पंहिंजे बाबा जो हिकिड़ो ई स्टेज ॾिठो उनजी ज़िंदगी में ऐं उहो बि ईअं ॾिठो त शादात कोट असांजो शहरु आहे जिते स्टेज नाटक थींदा हुआ ऐं बाबा साईं हुते ज़ाहिर पंहिंजे पंहिंजे शहर में सभु आर्टिस्ट कंदा हुआ जॾहिं टेलीविज़न जो दौरु कोन हो त मूं पहिरियों स्टेज ईअं ॾिठो त मूंखे ख़बर पई मूं बैनर बाबा साईं लॻाईंदो हो छा त हिदायतकार बि हो जेको बि ड्रामो पेश थींदो उहो ड्रामो हो जाग भिटाई घोट जेको मूं ॾिठो शादात कोट में उनजो बैनर मूं ॾिठो मूं नालो पढ़ियो नज़ीर लगारी मूं चयो बाबा साईं जी हुन में आहे बाबा जी तस्वीर बि लॻियल हुई उहो बाबा सां ज़िक्र न कयो उन जी तारीख़ ते वञी उते जंहिं पंडाल में ड्रामो थियणो हो शाम जो ई पहुतुसि त हिन कुर्सियूं वुर्सियूं लॻाइनि पिया उहो स्टेज जो दौरु ॾाढो ॾुखियो हो सभु अदाकार पाण मूं ॾिठो पए त उहे कुर्सियूं खणनि था पिया ऐं स्टेज ठाहिणी हूंदी हुई पंहिंजी महिनत सां अॼुकल्ह त सेट ठाहिणो पवे थो सही तॾहिं स्टेज ठाहिणी हूंदी हुई सही ऐं पोइ सेट बि ठाहिणो हूंदो हो यानी तव्हां अंदाज़ो लॻायो पोइ मां लिखंदो पियो तव्हां हुते पहुतुसि त मुंहिंजो हाणे बाबा जी नज़र पवंदी मूंखे ॻाल्हाईंदा त मां लिखंदो पियो तव्हां कीअं कजे मूं चयो हाणे हिकु दफ़ो स्टेज ते चढ़ी वञे पोइ मूंखे कहिड़ा दड़का ॾींदो ज़ाहिर आहे उहो करेक्टर में हूंदो ऐं थियो बि ईअं ई जॾहिं हू स्टेज ते आर्ट माना ड्रामो शुरू थी वियो तेसि ताईं मां हुनखां लिखंदो रहियुसि ऐं जॾहिं स्टेज ते हुननि किरदारु पंहिंजो शुरू कयो त मां वञी अॻियां वेठुसि अच्छा हाणे हू ज़ाहिर आहे माइक ते ॻाल्हाइनि बि पिया आहिनि मूं ते नज़र कंद साम्हूं वेठो आहे कावड़ में ॾिसनि बि पिया हुननि जा हिकिड़ा एक्सप्रेशन्स हुया हाणे कावड़ आहे पर जॾहिं हुननि जो सीन ख़तमु थियो त परदे खे थोरो परे करे मूंखे सॾु कयो मथे पोइ चई त तव्हां अकेलो स्टेज ते आयो आहीं ॾिसण त मूंखे ॿुधाई था तोखे ड्रामो ॾिसणो आहे पोइ अंदरि ई मूंखे कुर्सी लॻाए ॾिनऊं ऐं मूं उहो ड्रामो ॾिठो छा आहे त हीउ बि हिकिड़ो वॾो अलमियो आहे आर्टिस्ट छो नथो चाहे त हुनजो औलाद आर्टिस्ट थिए ज़ाहिर आहे उहो जेके तकलीफ़ूं ॾिसनि पिया उहे चाहिनि पिया त उहे तकलीफ़ूं न ॾिसनि हालांकि उन्हनि जो मक़सदु इहो ई हो त आर्ट फ्लोरिश थिए पर जेका हालति हुई उन 90s लेट 90s में ऐं शुरू वारे 2000s में उहा ॾाढी ख़तरनाक हुई यानी सम्झो त उहो असांजो ख़राबु थी चुको हो स्टेज थिएटर उनखे वरी हींअर जिदत आई आहे ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे त जदीद थिएटर जीअं शुरू थियो आहे त मूं वरी ज़ाहिर आहे हिकिड़ो चवंदा आहिनि त जीन्स में आर्ट शामिलु हूंदो आहे त पोइ वरी मूं हिकिड़े जदीद थिएटर ते पेर रखियो आहे ऐं तक़रीबन 8 खां 10 स्टेज नाटक करे चुको आहियां चई सघिजे थो त इंस्पिरेशन आहे ज़ाहिर आहे हू आर्टिस्ट न हुजे हा त शायदि आउं इहो कमु न करे सघां हा त मतिलबु इहा त पोइ सुठी ॻाल्हि थी वई न हाणे तव्हांखे स्टेज में कुझु चेंजिस नज़र अचनि थियूं पर इन जो जवाबु तव्हां पोइ मूंखे ब्रेक खां पोइ ॾिजो छो त ब्रेक जो बि वक़्तु थियो आहे जी व्यूअर्स वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो कारे न वञिजो जल्दी हाज़िर था थियूं
ॿिए तव्हांखे भलीकार कंदासीं ऐं इहे बिल्कुलु शोबी भाई बि असांखे जॉइन करे वरितो आहे और उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन किरण, अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूद मेहमान जो हैं मौजूद हैं, और सबको गुड मॉर्निंग, मतलब गुड आफ्टरनून। मेरी गुड मॉर्निंग होती है क्योंकि जो आपको पता है हमारी फील्ड है, हमारा जो शोबा है वो रात भर जागना और फिर उसके बाद दिन भर सोना, तो मॉर्निंग शोज़ और इवनिंग शोज़ हमारे लिए थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन ये है कि इनसे हम जिंदा हैं। और तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। आज से हमने आज़ादी वीक भी स्टार्ट कर लिया। और ये आपने मेरे साथ थोड़ा सा धोखा चीटिंग की है, देखिए। आप इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ड्रेस पहन के आई हैं, इनकलाबी फ्लैग लगा के आई हैं, पाकिस्तान का पूरा एक जिसे कहते हैं मोटिवेट किया है आपने, तो मुझे भी बताना चाहिए था ताकि मैं भी उसी तैयारी से आता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह कल आपका और मेरा कंपटीशन होगा, कॉपी कर लूँगा आपको। कोई मसला नहीं। अच्छा, मां जब ब्रेक खां पहिरियां तव्हां खां पुछां पई त तव्हां उहो दौर बि ॾिठो जंहिं टाइम बाबा तव्हांजा स्टेज पिया कनि ऐं वरी ही वक़्तु बि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, त मां तव्हां खां इहो ई पुछियो त तव्हांखे चेंज छा नज़र आयो आहे हींअर? चेंज इलाही आहे। जदीद जेको थिएटर आहे असांजो उन तरक़ी त कई आहे, पर ॼण असां वॾा माण्हू विञाया आहिनि। हींअर सहूलियतूं आहिनि पर असां वटि उहे आर्टिस्ट उन लेवल जा न आहिनि जेके उन दौर में हुआ। ईअं कोन्हे त सफ़ा अणाट आहे, आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि, पर आउं सम्झां थो त जिदत अचण सां ड्रामे तरक़ी कई आहे, इवॉल्व थियो आहे, ऐं कुझु इदारनि ज़िमेदारी थोरी घणी खई आहे जेका उन्हनि खे घणी खणणु खपे। सही। फॉर इंस्टेंस जीअं असां वटि कल्चर खातो आहे, उन आर्ट्स काउंसिल खे थोरो फ़रोग़ ॾिनो आहे, मुख़्तलिफ़ हिन में डिवीज़न्स में आहिनि, पर के अञा जेको आहे सो उन में खुटल आहिनि। सो उहो ड्रामो शहर अञा ताईं ॼण सरकारी हुन सां न वियो आहे, पर मतिलबु हिकिड़ो जेको आहे सो उहो प्रोफेशनलाइज़ अञा ताईं न थी सघियो आहे। बाक़ी इहो थियो आहे जदीद स्टेज थियण सां त कम्युनिकेशन जो दौरु वधण सां असां हिकिड़ी ट्रू माना में शयूं ॾिठियूं आहिनि त थिएटर थियणु कीअं घुरिजे, या न थिएटर जेको हींअर UK में थिए पियो, जेको इंडिया में थिए पियो, त असां उन्हनि खे ॾिठो आहे कम्युनिकेशन्स जा जेके ज़रिया आहिनि टेलीविज़न जा या इंटरनेट जे वसीले त असां ॾिठो आहे त हाणे हू छा पिया कनि ऐं असां उनखे कीअं, मिसाल असां वटि जीअं ज़िया मुहिद्दीन साहिबु ॿाहिरां उहो पढ़ी आयो UK मां ऐं हुन अची हिते हिकिड़ो इदारो क़ाइमु कयो ऐं उतां जेके शागिर्द निकिता उहे सुठो कमु पिया कनि। सही। ऐं उनखां अलावा काफ़ी पढ़िया गढ़िया आर्टिस्ट जेके आहिनि, छाकाणि त हिकिड़ो ड्रामो अॻे थींदो हो कंहिं झर झंग में उनखे प्रोमोट करण जो या ॿियनि ताईं पहुचाइण जो ज़रियो न हो। VCR ते रिकॉर्ड थींदो हो, पोइ उहा कैसेट कंहिं वटि पहुती त न पहुती, ॿुधंदा हुआसीं त ड्रामो थी वियो। तस्वीरूं हूंदियूं हुयूं, तस्वीरूं केतिरो ॻाल्हाईंदियूं ॿुधाईंदियूं त ठीकु आहे, एक्सप्रेशन सुठा आहिनि, पर हाणे छाकाणि त सोशल मीडिया ते उते जो उते उहे ड्रामा लाइव उन्हनि जी परफॉर्मेंस ज़ाहिर आहे माण्हू विज़िबल कनि था, ॾिसनि था, ऐं वरी पोइ उन ते डिस्कशन्स थियनि थियूं, त पोइ छा आहे त हिकिड़ी ज़िमेदारी आर्टिस्ट खई आहे त मुंहिंजो हाणे अॻे इहो हो त मुक़ाबिलो आर्टिस्ट जो वधि में वधि उन शहर सां घणो करे हो। जेकॾहिं आउं कराची जो आहियां त कराची जूं नाटक सोसाइटीज़ अकेडमीज़ जेके आहिनि उन्हनि सां मुंहिंजो मुक़ाबिलो आहे, पर हाणे सॼी सिंध सां आहे, बल्कि सॼी दुनिया सां मुक़ाबिलो आहे त सिंध जा आर्टिस्ट कीअं कमु था कनि। उन मुक़ाबले उन कॉम्पिटिशन बुनियादी तौर ते जेको आहे उहो तरक़ी ॾिनी आहे आर्ट खे, ज़िमेदार थियो आहे, डायरेक्टर बि, राइटर बि, एक्टर बि, त यार हीअं बहितर हुजणु खपे। पोइ नाले जे करे बि ठीकु आहे, भई मुंहिंजो नालो आहे इमरान नज़ीर, जॾहिं आउं ड्रामो लिखां थो त उहो सिर्फ़ु हाणे उन शहर जा माण्हू कोन ॾिसंदा, उहो वर्ल्ड वाइड ॾिसंदा, त मूंखे उहो लिखणु घुरिजे। सो सम्झां थो काफ़ी नाला ॻणाए सघजनि था जेके जदीद थिएटर में सुठो कमु कनि था, डायरेक्शन में बि, एज़ एन एक्टर बि ऐं स्क्रिप्ट राइटर बि। ईअं चई सघिजे थो त जदीद थिएटर अञा असां वटि जेको आहे सो हुन पेर खणणु ज़रूरु शुरू कया आहिनि, पर ईअं न आहे त उहो अञा पियो आहे, उहो उथियो आहे ऐं तरक़ी कंदो। जी, कर खयो अथई, ऐं मां सम्झां थो त हीअ तरक़ी कंदो, अञा तरक़ी कंदो। नौजवान जेके हुन में अचनि पिया पढ़िया गढ़िया, ऐं उन्हनि में हिकिड़ो जज़्बो आहे, जीअं तव्हां जेन ज़ीज़ ऐं अल्फ़ा ऐं सभु ॻणाया, त उन्हनि में वरी ज़ाहिर आर्ट जो बि ओतिरो ई एंथुज़ियाज़म आहे त असां ज़ाहिर हिन में बि पंहिंजी फील्ड में मंझरायूं। सो आउं सम्झां थो, मां पूरो उमेद आहियां जेको जदीद थिएटर हींअर शुरू थियो आहे सिंध में, 15-18 सालनि खां हुन जेका तक़वियत हुनखे मिली आहे सो तरक़ी कंदो इंशाल्लाह। सर, तव्हां माशाल्लाह लिखो बि था ऐं तव्हांजा 7 किताब बि आहिनि, त छा तव्हांजो टॉपिक हूंदो आहे, छा ते लिखंदा आहियो तव्हां? असल में बुनियादी तौर आउं शाइर आहियां, 95 खां मूं लिखणु शुरू कयो आहे,
पर मूंखे ईअं लॻंदो आहे 2000 खां पोइ शाइरी ईअं असां थोरो धार धार थी विया आहियूं, पोइ ख़बर न आहे। पर इहो आहे त ज़ाहिर इदारो प्रोमोट थियो, पब्लिकेशन जो कमु थोरो वधीक थी वियो। असां वरी हिकिड़ो अदबी मैगज़ीन बि कढंदा हुआसीं, नई आस जे नाले सां, त उन्हनि खे पढ़णु, एडिट करणु, छपाइणु, माण्हुनि ताईं पहुचाइणु, पोइ इहो सिलसिलो ॼण त मुंहिंजो नसुर जे पासे हलियो वियो। ऐं मूं इलाही एडिटोरियल लिखिया, पब्लिशर नोट्स, इलाही मज़मून लिखिया, ऐं उनखां अलावा मूं वेझर में तहक़ीक़ जो कमु कयो आहे, एमफिल मुकमिल कई अथमि, त उन हवाले सां मां मक़ालो लिखणु उहो उन पासे थीसिस मुकमिल करे चुको आहियां। त इन पासे याने शाइरीअ खां थोरो हटी नसुर जे पासे अची वियासीं। सही। ऐं मौजूदु मुंहिंजी सुञाणप एज़ अ पब्लिशर आहे। ऐं मां शायदि इहो पहिरियों दफ़ो इंकशाफ़ कंदुसि त मूं स्टेज बि कयो आहे। ऐं शहीद नज़ीर लगारी साहिब सां मुंहिंजा 2-3 स्टेज नाटक आहिनि। अच्छा अच्छा। ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त सभ खां पहिरियों जेको स्टेज ड्रामो मूं ॾिठो ऐं मूंखे शौक़ु पैदा थियो उहो नज़ीर साहिब जो दहशतगर्द जे नाले सां। उते जीअं हींअर ॻाल्हि कई इमरान भाउ, त ॻोठनि में, नंढनि नंढनि शहरनि में, या उन दौर जी तक़ाज़ा बि ईअं हुई त ओॾीमहिल जेको स्टेज थींदो हो उनजी हिकिड़ी अलॻि धूम हूंदी हुई, उनजो हिकिड़ो अलॻि उरूज हूंदो हो। उते ईअं थींदो हो, माना हाणे 3 महीना मूं छो त मूं कमु बि कयो आहे, घटि में घटि 2 खां 3 महीननि जी तयारी सां हिकिड़ो 3 कलाकनि जो 2 कलाकनि जो स्टेज थींदो हो। 3 महीना उनजी तयारी थींदी। जीअं अॻोणे दोस्त ॻाल्हि कई अहिड़ी रीति, हींअर त ठहियल सेट ते अची थो वञे न माण्हू, असां बैलगाॾियूं खणी ईंदा हुआसीं, असां काना जंग मां कटे ईंदा हुआसीं, थूणियूं पंजर खणी ईंदा हुआसीं, उते घर ठाहींदा हुआसीं। इन में वरी 5-5 ॾींहं हफ़्तो उहो सेट ठाहिण में लॻंदो हो। ऐं रिहर्सल घटि में घटि हिकिड़ो महीनो पूरो रिहर्सल थींदी हुई, तॾहिं उहो स्टेज प्ले थींदो। अच्छा, हाणे 3 महीना ड्रामो थियण खां अॻु में तयारी, त एतिरी वरी ड्रामे थियण खां पोइ उनजी पज़ीराई हूंदी हुई। माना उनजो मज़ो कुझु ॿियो हूंदो हो। माना राति जो ड्रामो थी वियो त सुबुह जो इहा हूंदी त हीअ त DSP हो हुते, हीअ भाउ वॾेरो, अहिड़े क़िस्म सां माना पूरे उन्हनि शहरनि में। अच्छा, हाणे मीडिया जो दौरु आहे त माण्हू कार्ड रखी छॾियो फेसबुक ते त दुनिया खे ख़बर पइजी वेंदी। असां वारे दौर में ईअं कोन हो। शहरनि में किड्स फोटू ऐं वॾा वॾा बैनर ठहंदा, पेंटर ठाहींदा लॻंदा। असां वरी उन दौर में हिकिड़ी ॿी बि शइ आंदी त ॻोठनि वारनि खे कीअं ख़बर पए त माना ड्रामो आहे हिते, पोइ असां टांगे ते स्पीकर रखी ऐं पोइ वॾे हिकिड़े इलाइक़े में वरी अनाउंस कंदा हुआसीं त भई सुभाणे या परीं या 3 ॾींहं ते जेको आहे हिते ड्रामो थींदो शहदादकोट में, ऐं अहिड़ा हीअ ड्रामो आहे अहिड़े तरीक़े। पोइ इलाही पब्लिक हूंदी हुई ओॾीमहिल त टिकेट ते बि ड्रामो थींदो हो त असां जेके हॉल बुक कराईंदा हुआसीं या जेके सिनेमा हूंदियूं हेठि मथे फुल हूंदियूं, माण्हुनि ॿाहिरि बीह चवंदा असांखे या टिकेट कोन मिली, त उहो हिकिड़ो वॾो माहौल हो। दहशतगर्द जेको ड्रामो हो उहो पहिरियों दफ़ो जॾहिं मूं ॾिठो, मूंखे ख़बर कोन हुई त स्टेज हीअं थींदी आहे माना। ऐं सभु बि ड्रामा अहिड़ा न थींदा हूंदा, पोइ जीअं परदो खुले थो ऐं असां ॾिसूं था एक्टर्स खे ऐं उहे कीअं वाक कनि था, परफॉर्म कनि था, मूंखे लॻे पियो त हू ड्रामो को TV जो को मतिलबु सीरियल हो। किथे ईअं न लॻो त को हिकिड़ो मिंट हिन कैरेक्टर देरि ॻाल्हायो हूंदो। थिए पियो हाणे त खोड़ सातिरो, हींअर जदीद ड्रामे में बि अहिड़ियूं खोड़ ग़लतियूं अचनि पियूं, पर उन्हनि जी एॾी महिनत हूंदी हुई। हिकिड़ो कैरेक्टर वियो, ॿियो आयो, हू वियो, ऐं ईअं ई माना हलंदो रहियो। सही, उहा ई ॻाल्हि आहे न, मतिलबु महीनो पहिरियां जो प्रैक्टिसिस थींदियूं, रिहर्सल्स थींदियूं, त उनजो नतीजो त सुठो ई निकिरंदो। तमामु सुठो। अच्छा, दहशतगर्द ड्रामे जो ईअं थियो त जंहिं ॾींहं ते उहो ड्रामो रखियलु हो उन ॾींहं ते शाम जो तेज़ बरसाति थी वई, तमामु तेज़ बरसाति थी वई। पोइ उन ॾींहं ते पोस्टपोन थियो, उते ई ऐलान कयो वियो त सुभाणे थींदो। असां सम्झोसीं त माना हीअ को ड्रामो हाणे जेको आहे न थियो माना। पर ॿिए ॾींहं ते उनखां वधीक पब्लिक आई, जहिड़ो कर माना 2 ॾींहंनि जो उनखे हिकिड़ो वक़्तु मिली वियो ऐं माण्हू उते अची विया। अहिड़ो दौर हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है अवाम के लिए वो है पेट्रोल। कभी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, और अब तो डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। तो ये अवाम के लिए क्या तोहफ़ा है या अजियत है, क्या है? देखिए जी, जैसे कि आपको इल्म है कि पिछले कोई 4 महीने से जो खलीज फ़ारस की सूरत हाल रही, उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया था वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी। बिल्कुल। और क्योंकि जो जिस जगह पे जंग हो रही है वो एक एपिक जोन है ऑयल इंडस्ट्री का,
تو اس کی وجہ سے قیمتوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا اس کا امپیکٹ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا پہ آیا دنیا پہ ہے، اور جنہوں نے جنگ چھیڑی ہے وہ خود بھی اس کا شکار ہوئے ہیں. وہاں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اور عوام وہاں پہ بھی سپریس ہوئے ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ بدقسمتی سے لوگوں کی قوت خرید کم ہے تو اس 350 سے لے کے 450 روپے لیٹر کی کوئی چیز جو ہے وہ ان کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے. تو یہ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں نے کمر توڑی ہے, مہنگائی میں اضافہ کیا ہے, اوور آل ہر چیز میں اس کا امپیکٹ آیا ہے. بٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے اب یہ ڈکلائننگ زون میں ہے. آگے اگر کچھ مثبت خبریں آ رہی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ قیمتیں نیچے آئیں گی اور کافی نیچے آئیں گی. میرا کیونکہ سبجیکٹ ایل پی جی ہے اور وہ بھی گھریلو صارفین کے لیے اس وقت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ پائپ لائن میں گیس آ نہیں رہی ہے, تو وہ بھی عوام کے لیے کنسرن رہا ہے. تو اس میں بھی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 10 دنوں میں تقریباً $60-70 کی کمی واقع ہوئی ہے, تقریباً 40 سے 50 روپے کلو کی گراوٹ آئی ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ صورتحال رہی تو اس ہفتے کے آخر میں یہ قیمتیں 300 روپے کلو سے نیچے آ جائیں گی. تو کیا ہمیں ان فیوچر واقعی ایل پی جی پہ جانا ہی پڑے گا؟ دیکھیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری پائپ گیس ڈومین ہے ایس ایس جی سی کا, ایس ایس جی پی ایل کا, یہ زوال پذیر ہے. ہمارے پاس نئی ڈسکوریز نہیں ہوئی ہیں گیس کی. اب دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, اگر آپ کا جانا مڈل ایسٹ میں ہو, یو اے ای, سعودی عربیہ, وہ آئل رچ کنٹریز ہیں, مگر وہاں گھروں میں ایل پی جی کا استعمال ہوتا ہے, وہاں پائپ گیس کی لبرٹی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم نے جو 60 کی دہائی میں جو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قدرتی عطیہ دیا, ایک نعمت دی, ہم نے اس کو جو ہے وہ چولہوں کی نظر کر دیا, پائپ لائنس کی لاسز کی نظر کر دیا, اور آج ہم دیکھیں کہ ہم درآمدی ایل پی جی پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں, درآمدی ایل این جی پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو نئی ڈسکوریز نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو آبادی بڑھ رہی ہے جس طریقے سے, جس طرح ہماری ڈیمانڈ ہے, تو وہ نیچرل گیس کی پائپ گیس ڈومین پوری نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے اونلی آلٹرنیٹ فیول جو ہے وہ ایل پی جی ہے, جس کا کراچی سے لے کے گلگت تک کا انفراسٹرکچر موجود ہے, اسٹوریج پلانٹس بھی ہیں, سپلائی چینز بھی ہیں. اور ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اس کا جو ریچ ہے وہ ملک کی تقریباً کوئی 30 سے 35% آبادی تک ہو جائے گی. لیکن اس میں عوام کی سیفٹی کیا ہے؟ یہاں تو بیٹھے بیٹھے پھٹ جاتے ہیں. جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ ایل پی جی ایک خطرناک فیول ہے. دیکھیں ایل پی جی ایک ہیزیڈیس فیول تو ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چند مفاد پرست لوگوں نے اپنے چند پیسے کمانے کے چکروں میں لوگوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں. ہمارے یہاں سب سٹینڈرڈ سلنڈر بنانے کی فیکٹریاں بے انتہا ہیں اور سٹینڈرڈ بنانے کی فیکٹریاں کم ہیں. اب اوگرا کے ایکسپریس کے اوپر اگر آپ سلنڈر پرچیز کرتی ہیں, ایک اوگرا کے مجاز ڈسٹریبیوٹر سے, اس کی مارکیٹنگ کمپنی سے لیتی ہیں, وہ سلنڈر کبھی حادثے کا سبب نہیں بنے گا. مگر اگر ہم کریانے کے اسٹور سے, پلمبر کے اسٹور سے اور ایسے غیر مجاز دکانوں سے لیں گے سلنڈر, جو اور چند پیسے بچانے کے لیے ہم وہ سلنڈر لے لیتے ہیں, وہ سستا ہوتا ہے, اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہماری جان و مال سے ہم کھیل رہے ہیں, وہ پیسے نہیں بچ رہے. آپ لے سکتے ہیں, میں لے سکتی ہوں, یہ لے سکتے ہیں, عوام نہیں لے سکتی نا. وہ بھی تو مطلب دیکھنا پڑے گا نا کہ ان کی پرائزز بھی ہائی ہے, اوپر سے گیس اتنا مہنگا, اوپر سے پھر وہ سلنڈرز اتنے مہنگے, اتنی ریسورسز نہیں ہیں, تو وہ بندہ کہاں سے افورڈ کرے گا؟ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے تک جو سب سے چھوٹا سلنڈر ہوتا تھا وہ 11.8 kg کا ہوتا تھا. اب عوام کی قوت خرید کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عوام کے پاس مہنگی گیس خریدنے کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو ہم نے 2 کلو, 3 کلو, 6 کلو کے سلنڈرز مارکیٹ میں متعارف کرائے ہیں, اور یہ اوگرا کی مجاز کمپنیوں, لائسنس یافتہ کمپنیوں نے کرائے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2,500 سے 3,000 سے لے کے 4,000 روپے تک ایک سلنڈر جو ہے وہ ایک صارف کو مل جائے, اسٹینڈرڈ سلنڈر جو کہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ حادثے کا سبب نہیں بنتا, وہ مل جائے. فائبر والے جو ہیں نہیں, وہ بھی لوہے کے ہیں. جی دیکھیے فائبر والا جو ہے نا, میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ فائبر کا سلنڈر کامیاب اس لیے ہوا کہ جب لوہے کے سلنڈر سب اسٹینڈرڈ بننے شروع ہوئے اور حادثہ کا سبب بنے, تو عام تاثر عوام میں یہ گیا کہ لوہے کے سلنڈر پھٹ جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ سعودی عربیہ, یو اے ای, کویت, عمان کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو ہر جگہ لوہے کے سلنڈر ملیں گے. امریکہ چلے جائیں, لوہے کے سلنڈر ملیں گے. یہ جو فائبر کے سلنڈر ہیں, ان کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کے اس کمرے میں یہ سلنڈر رکھا ہوا ہے اور اگر آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہے,
تو وہ جو جب جیسے ہی ٹیمپریچر رائز ہوگا وہ سلنڈر میلٹ ہو جائے گا, اور جب میلٹ ہوگا وہ گیس لیک ہوگی اور اس سے اور زیادہ آگ میں پھیلاؤ پیدا ہوگا. تو فائبر کے سلنڈر جو ہیں انہوں نے اپنی جگہ صرف اس وجہ سے بنائی کہ مارکیٹ میں سب سٹینڈرڈ لوہے کے بنانے کی سلنڈر تھے, اور لوگوں کو یہ ایک تاثر یہ گیا کہ یہ سلنڈر حادثہ کا سبب بن جاتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں صارفین کو یہ کہوں گا کہ وہ اوگرا کے لائسنس مجاز یافتہ کمپنیوں اور ڈسٹریبیوٹر سے خریدیں, یہ جو پینٹ اور ہارڈ ویئر اور گلی کوچوں کی دکانوں سے نہ خریدیں. صحیح, इहा ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे. असां हिते छा कंदा आहियूं, जो अगरि हुन में कैपेसिटी हूंदी आहे 3 किलो जी त असां 3 किलो ई भराईंदासीं. ईअं न त थोरो घटि भराइजे, किलो 1.5 किलो घटि भराइजे. ऐं असां सेफ्टी जो ख़्यालु बि न रखंदा आहियूं, एहतियात बि न कंदा आहियूं, उनखे राति जो बंदि बि न कंदा आहियूं, ऐं उनखे खोलींदा बंदि बि अहिड़े तरीक़े सां कंदा आहियूं जंहिंजी वजह सां धमाका बि थियनि था. एहतियात नथा कयूं. ऐं ॿारनि जो यूज़ जेको ॾिठो आहे ऐं ॿुधो बि आहे त ॿारनि खे घटि में घटि सिलेंडर्स जे वेझो न रखंदा कयो. सो शोबे भाई, थोड़ी ख़तरनाक सी बातें हो गई, अब कुछ अच्छी अच्छी वाइब्स आनी चाहिए, कुछ सुना दें आप हमें. बिल्कुल श्योर, क्योंकि हम आज़ादी वीक भी कर रहे हैं साथ साथ, और एक वो कहते हैं ना कभी खुशी और कभी गम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये टाइकोन. इसकी वजह ये है कि इसमें कोई शक नहीं, ज़िंदगी में कभी खुशी और कभी गम, यही ज़िंदगी का साथ है. तो हमको तुमसे प्यार है पाकिस्तान, चाहे जैसा भी है. आई प्राउड पाकिस्तानी, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि ओवरसीज़ जितने भी टूर्स हैं वहाँ मैं सिर्फ गया ही इसलिए हूँ कि ये पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं या पाकिस्तान के लोग हैं. बेहतरीन बेहतरीन. तो बड़ा प्यारा सा नगमा. और इस नगमे के लिए ये है कि मैंने इसे रीमेक किया था पिछले साल, और इसको सिंधी में किया था. वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत हिट हुआ था, लोगों ने बड़ा पसंद किया था. अच्छा, तो वो मैं सिंधी में सुधारिया. हेलो. तुझो पाकिस्तान ही मुंजो पाकिस्तान, हिनते दिल कुर्बान, हिनते जान भी कुर्बान. तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है. इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान. तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है. इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू. इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू. इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू. ये वतन प्यारा वतन सरमाया ओ ईमान है. ये वतन प्यारा वतन सरमाया ओ ईमान है. इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान. ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है. इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है.
जागती ताबीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती ताबीर है। हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ओ ईमान है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया ओ ईमान है। हिंदे दिल कुर्बान हिंदे जान भी कुर्बान। तुंजो पाकिस्तान आही मुंजो पाकिस्तान आ। तुंजो पाकिस्तान आही मुंजो पाकिस्तान आ। इस पे दिल कुर्बान हिंदे दिल कुर्बान हिंदे जान भी कुर्बान है। हिंदे दिल कुर्बान हिंदे जान भी कुर्बान है। हिंदे दिल कुर्बान। वाह जी वाह, बेहतरीन बेहतरीन, ये सही कहा, हिंते दिल कुर्बान हिंते जान भी कुर्बान है, वाकई। सो हिते वठूं था ब्रेक ऐं जल्दी हाज़िर था थियूं। रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम। रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम, रंगन भरी शाम हे रंग बरंगी शाम। मैं तव्हांखे भली कार्ड कंदासीं रंगन भरी शाम में। सर तव्हां खां मां पुछणु चाहींदमि त जीअं माशाल्लाह पोइट्री बि तव्हां कई आहे, वरी पब्लिशर बि आहियो, सभिनि खां पहिरियां त इहो ॿुधायो त घणो करे असां वटि जेके पोइट्स ईंदा आहिनि उहे इहे ॿुधाईंदा आहिनि त भई असां किताबु छपाइणु चाहियूं था पर असां नथा छपाए सघूं, कुझु इशूज़ आहिनि, कुझु प्रॉब्लम्स आहिनि, त छा किताबु छपाइणु वाक़ई एॾो ॾुखियो आहे? ॾिसो, सभिनी जेके फील्ड्स आहिनि, आर्ट हुजे, जीअं हींअर इमरान ॻाल्हि कई त मूंखे बाबा स्टेज ते न वठी वेंदो हो, या आर्टिस्ट चाहींदा आहिनि त मुंहिंजो औलाद न अचे। ईअं रुॻो आर्टिस्ट लाइ न आहे, मां सम्झां थो ॿियनि अदब फ़नून लतीफ़ा जेके बि शोबा आहिनि उन्हनि में ईअं आहे त जीअं मिसाल मां मुंहिंजो नंढड़ो हुते स्कूल में पढ़ंदो हो त मुंहिंजे लाइ मशहूरु हुते ई शाइर आहे त उनखे हुते उस्ताद बि चवंदा हुआ शाइर जो पुटु आहे, मज़ाक़नि में बि, ऐं ॿिया ॿार बि। पोइ वरी कुझु खिलंदा हुआ, पोइ मुंहिंजो नंढड़ो मूंखे घर ॾे अची ॿुधाईंदो हो, बाबा तव्हांखे शाइर चई मूं ते खिलनि था। त अहिड़ी रीति असां वटि समाज में जेके शयूं आहिनि न राइज, उन्हनि जो ग़लति इस्तेमालु थिए थो ऐं माण्हुनि खे इन्हनि शयुनि जी ख़बर बि कोन आहे त आर्ट आहे छा। केतिरनि ई माण्हुनि खे ख़बर न आहे। ऐं हींअर वरी असां वटि जीअं ई जेको आहे सोशल मीडिया जो दौरु आहे, तीअं असांजो नौजवान वरी ॿिए पासे वञे पियो, ग़लति इस्तेमालु थिए पियो शयुनि जो। त असांजी धरतीअ जी सुञाणप आर्ट आहे, अदब आहे, तारीख़ आहे, ऐं ॿियनि क़ौमुनि में बि ईअं ई हूंदो आहे त उन्हनि जो अदब उन्हनि जी सुञाणप हूंदो आहे, उहो ई ॿुधाईंदो आहे त तव्हांजूं क़ौमूं छा हुयूं। शाइर जो हुजणु माना शौर जी साबुती हूंदी आहे, त उन लाइ ईअं अहिड़े क़िस्म जा कमेंट थींदा आहिनि। ज़ाहिर आहे इन में समाज जो बि किरदारु आहे, इदारनि जो बि किरदारु आहे। ऐं तव्हां जेको मूंखां सवालु कयो उहो इहो त किताबु छपाइणु एतिरो ॾुखियो आहे, इहा हक़ीक़त आहे। किताबु जेतिरो लिखणु ॾुखियो आहे ओतिरो छपाइणु बि ॾुखियो आहे, पर सभिनी फील्ड्स में जेको आहे शोबनि में अलॻि अलॻि मायार बि त थिए थो न, त कहिड़ी शइ छपजणु घुरिजे, कहिड़ी शइ न छपजणु घुरिजे। हाणे ग़लतुल आम बि थिए पियो। हिकिड़ा दोस्त आहिनि जेके घर में वेही उतां जेको आहे ॾिसनि था त फलाणे जो किताबु शेयर थियो त उहे फ़ोन करे पुछंदा आहिनि, साईं उहो हाणे छा रेट लॻायो अथव? त मूंखे खिल बि ईंदी आहे, करे करे चिड़ बि ईंदी आहे, त माना हाणे हिनखे छा ॿुधाइजे। पोइ करे करे चवंदो आहियां त आलू कोन पिया खपायूं, बसर पटाटा त कोन पिया खपायूं, जो हुनजो रेट तव्हांखे ईअं ई ॿुधाए छॾिजे त 70 रुपया किलो आहे। जेके शयूं माण्हू पसंदि कनि था ऐं अदब खे, लेखकनि खे, शाइरनि खे, उन में कहिड़ी शइ ॾियणु चाहिनि था समाज खे, पहिरियां त उहो ॾिसनि न हू। त असां जेको नंढा रोड़िया आहिनि उन्हनि में असांजी ज़हनी जेका आहे उहा ख़लश वधीक आहे, उनजो शौक़ु ऐं ख़्वाहिश वधीक आहे, या असांजी शइ में को समाज खे पैगाम बि आहे, इन मां इनकलाब ईंदो, माण्हू उन्हनि जूं शयूं पढ़नि छो। इहे सभु सुवाल आहिनि। जेकॾहिं सुठो अदब हींअर बि सर्जिजे थो, किताबु लिखिजे थो, उहो छपिजे थो त सेल थिए थो, विकिरो थिए थो, माण्हू पढ़नि था, ऐं उनखे छपाईंदड़ बि शौक़ सां
सही छापनि था सही। त उन में का अहिड़ी ॾुखियाई कान्हे सही छो त ज़ाहिर आहे असां वटि जेके शयूं छपजंदियूं विकिरो थींदियूं माण्हू पढ़ंदा त असां त ॻोल्हे वठी ईंदासीं न उन्हनि खे यार इमरान भाउ अॼु तुंहिंजो किताबु कुझु लिखियो अथई भला हींअर बि असां चवंदा आहियूं केतिरा नॉविल निगार आहिनि उन्हनि खे असां फ़ोन करे चवंदा आहियूं साईं को नॉविल लिखियो अथव का आत्मकथा या ॿियूं शयूं अहिड़ियूं जेके माण्हू पढ़ी ऐं ज़ाहिर आहे उनखे छपाई जा जेके प्रोसेस आहिनि न उहे हींअर बि 10-12 हूंदा आहिनि ऐं पहिरियां त उहो लिखिजी आयो पोइ उहो फेयर थियो वरी उहो कंपोज़ थियो प्रूफ थियो पोइ उहो छपाई जे मरहले में वेंदो उन में वरी टाइटल ॿियूं शयूं इलाही आहिनि केतिरा वॾा वॾा राइटर बि आहिनि जिन जा नाला आउं कोन खणंदुसि पर उहे जीअं उन्हनि मोबाइल ते लिखियो तीअं स्क्रीन शॉट मोकिले छॾींदा आहिनि या वरी उहो पंहिंजी लिखणी खे फेयर बि न आहिनि कंदा इहा तकलीफ़ बि न आहिनि कंदा त पोइ वरी जेॾीमहिल उहो कंपोज़ थींदो आहे चवंदा आहिनि यार हीअ त तव्हां असांखे हीअं करे छॾियो हूअं करे छॾियो पब्लिशर लाइ त खोड़ सारा सुवाल थींदा आहिनि पर पब्लिशर इहो सुवाल न करे सघंदो आहे त तव्हां शयूं असांखे मोकिलियूं कीअं ऐं असां तव्हांखे ठाहे कीअं न पर इहो त पोइ तव्हांजो राइट आहे न त तव्हां करे सघो था हा पर असां इनखे बि अदब जी तोहीन सम्झंदा आहियूं असां चाहींदा आहियूं त इहो बि थिए इनखे इनजी निदा न कजे इनखे थोरो प्रोमोट कजे उन्हनि जे लाइ राह हमवार कजे उन्हनि लाइ सहूलियतूं पैदा कजनि पर हो तव्हांजे लाइ बि त थोरी सहूलियत पैदा कनि न हा बिल्कुलु इहो आहे इहो त थिए थो तकलीफ़ थिए थी माण्हू खे सही पर बि तव्हां कुझु पोइट्री ॿुधाईंदव पंहिंजी पोइट्री ऐं मूंखे वरी ॾिसी वञा ॿुधाइणो हा पवंदो हा बिल्कुलु नो प्रॉब्लम छाकाणि जो मूं हींअर इहो ज़िक्र कयो त मां जहिड़ो को शाइर रहियो न आहियां कोई मसइलो न आहे पर पंहिंजी का पोइट्री त यादि हूंदी न शाइर गुज़ारे वञण खां पोइ बि शाइरी हूंदो आहे शाइरी अञा रहंदो त साईं हयात वेठा गज़ल जा कुझु बंद आहिनि ज़िंदगीअ जे पछाड़ रस्ते ते वाह ज़िंदगीअ जे पछाड़ रस्ते ते पाण खे तूं न साड़ रस्ते ते वाह हल कदम तूं वधाए मंज़िल ॾे हल कदम तूं वधाए मंज़िल ॾे ईअं ॻोढ़ा नगाड़ रस्ते ते वाह की न मिलंदई को राह रहबर किथ की न मिलंदई को राह रहबर किथ खोड़ ॾिसंदे बिगाड़ रस्ते ते ज़िंदगी जे पछाड़ रस्ते ते पाण खे तूं न साड़ रस्ते ते वाह दिल जनूनी अॻियां से कुझु न आहिनि दिल जनूनी अॻियां से कुझु न आहिनि ही जे बीठल पहाड़ रस्ते ते वाह ज़िंदगी जे पछाड़ रस्ते ते पाण खे तूं न साड़ रस्ते ते ज़बरदस्त ॿियो हिकिड़ो ॿिए गज़ल जा कुझु बंद आहिनि जी मुंहिंजो शीशे जो घर टुटी पवंदो मुंहिंजो शीशे जो घर टुटी पवंदो मूंखां जे हमसफ़र टुटी पवंदो वाह वाह हुनजो मूंखां टुटो सहारो जे हुनजो मूंखां टुटो सहारो जे मुंहिंजी दिलि जो शहर टुटी पवंदो वाह मुंहिंजो शीशे जो घर टुटी पवंदो नींहं जो नातो आहे थींदो नाज़ुक नींहं जो नातो आहे थींदो नाज़ुक हिन सां खेचल न कर टुटी पवंदो वाह वाह नींहं जो नातो आहे थींदो नाज़ुक हिन सां खेचल न कर टुटी पवंदो वींदे नज़रनि खे केरु रोकींदो वींदे नज़रनि खे केरु रोकींदो मुंहिंजे घर जो जे दर टुटी पवंदो मुंहिंजो शीशे जो घर टुटी पवंदो हुन वनीअ जो हशर बि छा थींदो हुन वनीअ जो हशर बि छा थींदो जंहिंखां जीअरे ई वर टुटी पवंदो हुन वनीअ जो हशर बि छा थींदो जंहिंखां जीअरे ई वर टुटी पवंदो मुंहिंजो शीशे जो घर टुटी पवंदो मूंखां जे हमसफ़र टुटी पवंदो बहितरीन माशाल्लाह न न वेरी नाइस मतिलबु घणो करे त पोइट्रीज़ थोरी ॾुखियूं हूंदियूं आहिनि कुझु सम्झ में ईंदियूं आहिनि कुझु न ईंदियूं आहिनि पर तव्हांजी शाइरी में मूंखे हिकु शइ सम्झ में आई आहे त इलाही ईज़ी वर्ड्स आहिनि जेके मतिलबु ईज़ी टू अंडरस्टैंड सादी ॿोली आहे त मुंहिंजे ख़्याल में त तव्हां बहितरीन शाइर आहियो ही मूं 2000 खां अॻु में लिखियो हूंदो अच्छा जी 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 एतिरो पुराणो आहे सीनियर शाइर रहियो ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त जीअं स्टेज तव्हां कयो पिया लिखो बि था ऐं ज़ाहिर डायरेक्शन बि कयो पिया कोशिश कयो पिया त इहो त प्रोसेस आहे सिखण जो डेली बेसिस ते इंसानु सिखे थो बट हिन वक़्तु तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त स्टेज राइटर डायरेक्टर एक्टर जे लाइ चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि सॼो ई स्टेज जेकॾहिं मां चवां
चैलेंज आहे त हिन में को अहिड़ो चैलेंज जेको वाकई हिन वक़्त ताईं हू मुंहुं थो ॾिए हुनखे? जी जी, असल में खोड़ चैलेंजिस आहिनि। हिकिड़ो वॾो चैलेंज जेको आहे उहो स्टेज नाटक में पैसे जो न हुजणु आहे। पैसे मां मुराद जॾहिं तव्हां उन स्टेज खे प्रोड्यूस नथा कयो, उन में पैसो नथा लॻायो त सुठा ड्रामा नथा ठहनि। सुठो ड्रामो कीअं ठहंदो आहे, उनजो स्क्रिप्ट रिच हुजे, सुठो राइटर जेको आहे उहो ज़ाहिरा पंहिंजी पेमेंट वठी ऐं उहो ड्रामो लिखंदो, ऐं डायरेक्टर जेको आहे उहो वसीला तॾहिं गॾु करे सघंदो जॾहिं हुन ड्रामे जी बजट हूंदी आहे, सुठी बजट हूंदी आहे, ऐं वरी सुठा आर्टिस्ट ज़ाहिरा उहे तॾहिं ई उन ड्रामे में कमु कंदा या तव्हांखे वक़्तु ॾींदा, छाकाणि त वक़्त जी ज़रूरत आहे। ऐं ॿियो इहो आहे त ड्रामे खे उनजी अहमियत खे सम्झण जी ज़रूरत आहे। जीअं असां वटि सिहत ज़रूरी आहे, उन जे लाइ असां हॉस्पिटल्स ठाहियूं था, पार्क ठाहियूं था, रस्ता ठाहियूं था, वॉकिंग ट्रैक्स ठाहियूं था त उते घुमी असां सिहत हासिलु करियूं। जीअं तालीम ज़रूरी आहे, न पढ़ंदासीं त जाहिल थींदासीं, ऐं उन जे लाइ केॾा जेके आहिनि सो उहे असीं वठूं था पिया स्टैंड्स। ईअं आर्ट ज़रूरी आहे सोसाइटी जे लाइ। सही। इन शइ खे सम्झणो पवंदो। जॾहिं असां हिन खे सम्झंदासीं तॾहिं असां बावर कराए सघंदासीं पंहिंजे स्टेक होल्डर्स खे त हिन खे ऑन कयो। हाणे आर्ट्स काउंसिल सिर्फ़ु ॿ जेके आहिनि उहे मुकमल फ़ाल आहिनि। हिकिड़ी हींअर सखर बि थी आहे, सिंध सॼी जी आउं ॻाल्हि थो करियां, कराची ऐं लाड़काणो फ़ाल आहिनि, उते ड्रामा थियनि पिया। सखर में बि हाणे मुमताज़ बुखारी साहिब ते आयो आहे, उहो फ़ाल थियो आहे। ख़ैरपुर बि हाणे वॾे हिकिड़े ॾिघे अरसे खां वठी हींअर उन्हनि इलेक्शन्स कराई। हैदराबाद जहिड़ो शहर, तव्हांजो ॿियो नंबर वॾो शहर, उते आर्ट्स काउंसिल जूं बिल्डिंग्स आहिनि, बॉडीज़ जुड़ियल आहिनि, पर उते का बि एक्टिविटी ड्रामे जी गवर्नमेंट जे तरफ़ां गवर्नमेंट स्पॉन्सर कयो हुजे कंहिं बि फेस्टिवल खे कान्हे का। हाणे इहे शयूं कीअं थींदियूं? मीरपुर ख़ासि आर्ट्स काउंसिल जो बुनियादु विधो वियो आहे, पर अञा हुआ। हाणे जॾहिं असां हुननि जी अहमियत खे सम्झंदासीं तॾहिं असां उन्हनि शयुनि खे करे सघंदासीं। हाणे इन में इहे सभु चैलेंजिस वॾा इहे आहिनि, ऐं उनखां पोइ ज़ाहिरा उन में पैसो इन्वॉल्व थींदो, बजट ईंदी, त पोइ वरी छा थींदो, सिख्या जो मरहलो हलंदो। त नौजवान जेको अचे थो उनखे अलफ़ बे जी ख़बर न आहे, शौक़ु खणी अचे थो ओनली, त मूंखे एक्टर थियण जो शौक़ु आहे। पोइ छा आहे त उहो उनखे सिख्या त हुजे ॿोलीअ जी ख़ासि तौर ते, छाकाणि त ड्रामो ॿोलीअ जो हिसो आहे, अदब जो हिसो आहे, सिंधी अदब आहे, लिटरेचर आहे। उन में जेकॾहिं ॿोली ख़राबु आहे त उहो सिंधी ड्रामे ते सवाल उथंदा त हीअ कीअं हिन ॿोलीअ जो ड्रामो आहे, ईअं उर्दू ॿोलीअ जो ड्रामो, ईअं अंग्रेज़ी ॿोलीअ जो ड्रामो, ईअं सिंधी ॿोलीअ ते बि ओतिरो ई। हाणे उहो ज़ाहिरा उनजी सिख्या थींदी, जीअं पाकिस्तान टेलीविज़न हो या इहे इदारा, उन्हनि वटि सिख्या हूंदी हुई। हाणे जॾहिं थिएटर थिए थो त उन थिएटर में सिख्या जो मरहलो, रुॻो ॿोली ताईं न, वरी एक्टिंग, स्टेज खे यूज़ कीअं कजे, उते फुटवर्क्स छा आहे, बॉडी लैंग्वेज छा आहे, ॻाल्हाइजे कीअं, आवाज़ कीअं पहुचाइजे, सॼा सिलसिला इहे हिकिड़े एक्टर जा, वरी ईअं ई डायरेक्टर जा। त इहे चैलेंजिस सिख्या सां रिलेटेड थी था वञनि। मूं पहिरें ॻाल्हि कई बजट जी, पोइ इदारनि जे न हुजण जी, पोइ सिख्या जे एब्सेंस जी, त इहे सभु शयूं गॾाए सॾाए थिएटर खे तकलीफ़ पहुचाइनि थियूं, त थिएटर बीहे नथो। सॉरी, मां तव्हांजी विच में ॻाल्हि थी कटियां पई। कंहिं वक़्त में त कुर्सियूं बि पाण लॻायूं वेंदियूं, पैसो बि पाण ख़र्च कयो वेंदो हुयो। अॼु आर्ट्स काउंसिल आहे, थोरी घणी सपोर्ट आहे, पर छा जेको आर्टिस्ट अचे थो उनखे उहा पे मिले थी जो हू कमु करे थो ऐं हुनजो घर हली सघे थो हिन मां? बिल्कुलु न, बिल्कुलु बि न। उनजी वजह इहा आहे त का बि आर्ट्स काउंसिल वधि में वधि साल में हिकिड़ो फेस्टिवल कराईंदी आहे। उन हिकिड़े फेस्टिवल में वधि में वधि 10 खां 15 ड्रामा हूंदा, कंहिं सुठी आर्ट्स काउंसिल जा, कराची ऐं लाड़काणे जा, न त 7, 8, 5। हाणे मूंखे ॿुधायो कि वॾे शहर में को हिकिड़ी का सोसाइटी या ड्रामेटिक क्लब त कान हूंदी, उते 10, 12, 15 हूंदियूं। पोइ छा थो थिए त हिकिड़े डायरेक्टर जो वारो 2, 3 साल अचे थो। ठीकु आहे, इहा डायरेक्शन जी ॻाल्हि आहे। एक्टर सभिनी खे त कास्ट नथो करे सघिजे। हर शहर में मिसाल 100 एक्टर आहिनि, त उहे 100 जा 100 कीअं हुन में हिसो वठी सघंदा। ऐं पोइ हुनजी बजट जेका आहे उनखे ख़र्च करे वञी एतिरो बचंदो आहे जो उहो ख़र्च सभिनी खे ॾेई ऐं डायरेक्टर वेहंदो आहे त मूं ड्रामो कयो आहे, ख़ुशि थियो आहियां। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त माइनस में हलियो वेंदो आहे माण्हू, ख़र्च हुते करे सुठो नाटक पेश करणु। ऐं हिते ॻणाईंदुसि, हिते नाटक शादाब असां पेश कयोसीं लाड़काणे आर्ट्स काउंसिल में। खान कंगे उनजो डायरेक्टर हो, खान कंगो आहे उन में एज़ एन एक्टर कमु पियो कयो, आगा ज़फ़र जो लिखियलु हो। उहो लाड़काणे जी तारीख़ जो सुठो नाटक ॻणियो पियो वञे। उनजी वजह इहा आहे त असां वटि जेके बि वसीला हुआ उहे सभु असां हुन ते लॻाए छॾियासीं।
ऐं आख़िर में ईअं थियो त 8-10 हज़ार जो डायरेक्टर साहिबु जेको कर्ज़ी थी वियो हाणे हिन महिल बि ईअं पियो थिए। तॾहिं आउं चवां पियो त जेकॾहिं शयूं स्टेक होल्डर्स जेके आहिनि उहे हुनखे ऑन कंदा त आर्ट फ्लोरिश थींदो। सही। हाणे आर्टिस्ट जेको हूंदो आहे उहो आर्टिस्ट हूंदो आहे, उनखे तव्हां चवंदो न तव्हां मज़दूरी कयो हाणे तगारी खणो, ज़ाहिर आहे सभु त उनखां न थींदो, छो त हुनजो कमु आर्ट आहे। उहो कंदो त हू बेदिलीअ सां कंदो, पोइ हुनखे ही पासो निकिरी वेंदो। ऐं हिकिड़ी तारीख़ आहे सिंधू तहज़ीब जी आर्ट जे हवाले सां, जेकॾहिं उनखे को खणी अचे थो पियो त इहो वॾो क़ौम ते थोरो आहे आर्टिस्ट जो। ऐं परफॉर्मिंग आर्ट्स में सभिनी खे इहो ॻणियां थो पियो अदब सां गॾु, ऐं वरी परफॉर्मिंग आर्ट जी तर्जुमानी थो कयां सभिनी जी, डांसर, रागी, अदाकार, हिदायतकार, परफॉर्मिंग आर्ट सां जुड़ियल सभु माण्हू उहे क़ौम जे मथां अहसान था कनि ऐं कुझु न हूंदे अहसान था कनि। ऐं चिथरूं बि उन्हनि ते आहिनि, जीअं मुर्तज़ा सवेर ॻाल्हि कई त हे त अदाकार आहे, अदाकार त आहे पर कंदो छा आहे, माना इहे सुवाल हूंदा आहिनि। ॼणा एक्टिंग माना हुनजे लाइ हिकिड़ो परियों पासो आहे, ऐं हू हुनजो घर चुल्हो वाक़ई सुवाल दुरुस्त आहिनि त हुनजो चुल्हो कीअं ॿरंदो हूंदो ऐं हू पंहिंजी ज़िंदगीअ जा ॿिया अख़राजात कीअं कंदो हूंदो। सो इहे सिलसिला आहिनि। ऐं आर्ट्स काउंसिल लाड़काणे सां सलाड़ियल आहियां, हुते 2-3 फेस्टिवल्स में ड्रामा करे चुको आहियां, त वेझड़ खां सूरत हाल असां हुते ॾिठी आहे। गुज़ारिश कंदुसि कल्चर खाते खे, ॾाढो सुठो कमु पिया कनि, त जेके शहर रहियल आहिनि उन्हनि ताईं इहे शयूं पहुचाइजनि, आर्ट खे उन्हनि शयुनि ताईं पहुचाइजे। मिसाल डिवीज़न्स में आहिनि, डिवीज़न्स खे 50-50, 60-60 किलोमीटर्स ताईं परे शहर आहिनि, उहे शहर जा आर्टिस्ट हुते नथा पहुची सघनि, त उन्हनि जे लाइ उन्हनि खे डोर स्टेप ते आर्ट ॾिनो। रुॻो आर्टिस्ट न पर अवाम बि न। मूंखे मिसाल तौरु शहदाद कोट जे हिकिड़े शहर में रहां थो जेको 50 किलोमीटर लाड़काणे खां परे आहे। मूंखे पंहिंजी फैमिली सां गॾु ड्रामो ॾिसणो आहे, ऐं ड्रामो राति जो ॾिसणो आहे, त आउं हुतां 50 किलोमीटर पंधु करे लाड़काणे थोरी वेंदुसि। मूंखे हुते डोर स्टेप ते ॾियो न, जीअं तव्हां हेल्थ ॾियो था पिया, जीअं तव्हां तालीम ॾियो था पिया, जीअं ॿियूं सहूलियतूं ॾियो था पिया, तॾहिं तव्हां आर्ट खे ज़रूरी इंग्रीडियंट सम्झंदव सोसाइटीअ जो, त पोइ तव्हांखे इहे स्टेप्स वठिणा। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, आर्ट खे बि प्रमोट कजे ऐं इन जे बारे में बि सोचणु घुरिजे। अलाए छो हिकिड़ो त असांजी सिनेमा ऐं ॿियो असांजा स्टेज ड्रामा, मां सम्झंदी आहियां त अॼु बि हिकु वॾो शिकार आहिनि, इन्हनि खे प्रॉपर वे में अॼु बि प्रमोट नथो कयो वञे। ख़ैर इहो इलाही वॾो टॉपिक आहे, न त वरी सम अदर टाइम ॻाल्हाईंदासीं। सर आपसे ये मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे LPG का गैर कानूनी इस्तेमाल भी हो रहा है, इसकी रोकथाम के लिए हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा जो कबाहत है वो ये है कि जो पॉलिसी है LPG की, जो आखिरी 2016 में आई थी, उसके बाद आज 10 साल हो गए हैं, हम नई पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसमें हमने सरकार को ऐसे एसोसिएशन और फेडरेशन के तवज्जुह से हमने उनको बताया कि देखें, जो LPG का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है रिटेल में, आपने देखा होगा गली कूचों में दुकानें खड़ी होती हैं जो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में मुंतकिल कर रही होती हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक इकदाम होता है। हमने सरकार को बायलॉज बना के भेजे हुए हैं एसोसिएशन के तवज्जुह से कि जी आप इसको सेफ्टी एम्बेड में लेके आएँ ताकि ये कानूनी ज़ुमरे में आ जाए। अब देखिए, जैसे कि अभी हम पहले सेगमेंट में ये बात कर रहे थे कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो बड़े सिलेंडर से खरीद सकें, तो लोग 1 किलो 2 किलो सिलेंडर की गैस भराने जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, जो आम दिहाड़ीदार तबका है। अब उस 1 किलो गैस खरीदने के लिए जो प्रोसेस है वो अभी तक कानूनी ज़ुमरे में नहीं आया है, हमें उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और ओगरा को हमने ये बात कई दफ़ा लिखी है और वो उस पर भी काम भी हो रहा है कि जी इस डिकेंटिंग, गैर कानूनी डिकेंटिंग को आप कानूनी ज़ुमरे में लेके आएँ। जितनी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे ये डिकेंटिंग पेट्रोल पंप्स पे भी होती है, प्रोवाइडेड कि आप उसको सेफ्टी एम्बेड में करें। तो ये कानूनी लकूना है जिसकी वजह से आप इस गैर कानूनी LPG की फ़रोख्त हो रही है। मैं समझता हूँ कि आने वाली पॉलिसी में ये एड्रेस हो जाएगा, तो ये इंशाअल्लाह ताला ये जो गैर कानूनी इस्तेमाल है ये ख़त्म हो जाएगा। लोगों को नीड है, हर मोहल्ले में हर गली में गैस की ज़रूरत है, तो ये दुकानों ने अपनी जगह खुद बना ली है। यही अगर कानूनी स्टेशन बने होते तो वो सेफ मैकेनिज्म में हो रहा होता। अब क्योंकि एक नीड है तो उस पर पाबंदी तो है, बट जहाँ कोई चीज़ की नीड होती है उसके ऊपर आप पाबंदी जितनी भी लगा लें उसका इस्तेमाल आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक जेन्युइन नीड है उसकी। तो हमने हुकूमत वक्त को और ओगरा को और तमाम मजाद इदारों को लिखा है कि आप इस गैर कानूनी गैस की फ़रोख्त को रोकने के लिए इसको कानूनी ज़ुमरे में लेके आएँ। सही। और हमें ये भी ज़रूर बताइए कि नया कारोबार स्टार्ट करने के लिए चैम्बर ऑफ पाकिस्तान कॉमर्स क्या कर रहा है, इसके लिए क्या इकदाम हैं? हमारी जो FPCCI है ये एपेक्स बॉडी है 345 मुख्तलिफ ट्रेड एसोसिएशंस और चैम्बर्स की,
ہم نے ابھی ایک پروگرام لانچ کیا اسٹارٹ اپ جو کے حساب سے کہ اسٹارٹ اپ کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ جن کو بچوں نے ینگ بچوں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں وہ اور انہوں نے ایک اچھی پروڈکٹ بنا لی ہے, انوویٹیو آئیڈیا ہے ان کا, تو ہم ان کو جو انویسٹرز ہیں اور انٹرپرینیورز ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑ رہے ہیں. کیونکہ اگر مثال کے طور پہ ایک بچے نے اگر کوئی روبوٹک آرم بنایا ہے, یہ میں آپ کو جینوئن بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے جب وہ اسٹارٹ اپس کو بلایا تو اس میں ایک بچے نے بڑا زبردست کام کیا کہ جو آرٹیفیشل لمز ہیں جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے تو وہ ہاتھ آرٹیفیشل ہوتا ہے, اس نے روبوٹک آرم بنایا جس میں ساری فنگرز اور ساری چیزیں آپ کی پوری ہتھیلی کی ایٹریبیوٹس کے اندر موجود تھے. اب اس کو بڑے کینوس پہ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم نے اس کو جو کراچی شہر میں بڑے گروپس تھے ان کو ہم نے انوائٹ کیا اور ایک پلیٹ فارم دیا اسٹارٹ اپس کو اور انویسٹرز کو کہ وہ ان پہ انویسٹ کریں تاکہ یہ بچے اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں. تو ایک تو ہم یہ ہمارا سیگمنٹ ہے. دوسرا ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اکیڈمیا ہیں, یونیورسٹیز, کالجز, وہاں ہم ان بچوں کو تیار کرتے ہیں جو انڈسٹری کی نیڈ ہوتی ہے. تو ہم انڈسٹری اور اکیڈمیا کو کولیبریٹ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو انڈسٹری میں کن بچوں کی ضرورت ہے, کیمیکل انجینئرز کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل ہینڈی اسٹاف کی ضرورت ہے, وہی جو علوم ہیں ان کو ہم وہاں بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ بچے جو ہیں اسی انڈسٹری کا حصہ بن سکیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں روٹری پاکستان کا بھی حصہ ہوں اور روٹری پاکستان میں ہم بھی انیشیٹو پہ کام کریں گے جہاں ہم یہ جو ہمارا ایک ایشو ہم نے ابھی آپ سے شیئر کیا کہ اس ملک صوبے میں 80 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے. بالکل. تو سی ایم سندھ نے یونیسیف کے تعاون کو ایک روڈ میپ دیا. یونیسیف کے تعاون سے اور روٹری ہم نے ایک کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم 2 UCs ہم نے چنی ہیں. ایک کراچی کی کیماڑی ڈسٹرکٹ میں جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے اور ایک سمارو عمر کوٹ میں. ان 2 UCs کو پہ اب ہم کام کر رہے ہیں, یونیسیف, سندھ لٹریسی ڈپارٹمنٹ اور روٹری پاکستان. ہم ان کر یہ رہے ہیں کہ جو 6 سال سے 16 سال تک کے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے کسی بھی وجہ سے, ان بچوں کا ہم پہلے سروے کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں کتنے بچے, کیونکہ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ بے فارم اور نادرہ کے ریکارڈ کے مطابق ہے, جو بہت بڑی تعداد میں لوگ بے فارم اور نادرہ کے ایمبٹ سے باہر ہیں. تو ہم ان بچوں کا ڈور ٹو ڈور, جس طرح ہم پولیو کے قطرے پڑھاتے ہیں, روٹری کا ایک سگمولک پروگرام ہے, تو اسی طرح ہم گھر ٹو ڈور جا رہے ہیں, یہ سروے شروع کر رہے ہیں. ہم اعداد و شمار جمع کریں گے ان بچوں کو, جو بچے جب ریڈار پہ آ جائیں گے کہ اتنا بچہ اسکول نہیں جا رہا, پھر ان کو نان فارمل ایجوکیشن سینٹرز یا ووکیشنل سینٹرز میں ہم ان کو تعلیم دیں گے. اور پھر ہر ہماری چیمبر, کیونکہ ہر لاڑکانہ چیمبر, خیرپور چیمبر, سکر چیمبر, کراچی چیمبر, حیدرآباد, ہم ہر پورے ملک میں ہیں. ہر ڈسٹرکٹ کی ایک الگ ٹریڈ ہے, جس طرح خیرپور کی کھجور ہے, سیالکوٹ کی سپورٹس ہے, وزیر آباد کی کٹلری ہے. تو ہم ان بچوں, ہم اپنے انڈسٹری سے, اپنے ممبر سے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کن کن ڈسپلنس میں ہیومن ریسورس کی کمی ہے, انہی بچوں کو ہم انہی ووکیشنل ٹریننگ میں تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ بچے جیسے ہی وہ ٹریننگ لیں, پڑھ لیں, تو وہ کام پہ لگ جائیں اور وہ نیشنل مین اسٹریم کا حصہ بن جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو ہم 79th انڈیپینڈنس ڈے بنا رہے ہیں, اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں ہم سب کو بے پاکستانی ہم کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم کمیونٹی کو پے بیک کریں. ہمیں دیکھیں, یہ سوال ہر جگہ ہوتا ہے, آپ نے ابھی سیگمنٹ میں بتایا تھا کہ پاکستان سے بچے باہر جا رہے ہیں, ہر بچہ کہتا ہے کہ جی باہر چلے جائیں, یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا, اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا. تو اگر ہم یہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا, تو یہ مطلب وہ ہم اس پہ نہیں آتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے اس ٹائم کہ ایوری پاکستانی جو اپنی کیپیسٹی میں, چاہے یہ تھیٹر کے طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, وہ اپنی پوئٹری سے خدمت کر رہے ہیں, بھائی صاحب موسیقی سے کر رہے ہیں, آپ میڈیا پہ ایک پاکستان کا سافٹ امیج پروو کر رہی ہیں, ہم سب کو اس ملک میں ایک نہ ایک کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جب ہم اپنا حصہ ڈال سکیں. صرف ہم یہ اگر ارادہ کر لیں کہ یار یہ جو ٹریفک لائٹ ہے اس پہ ہمیں لال بتی پہ رکنا ہے, یلو پہ جو تیاری کرنی, ہری پہ چلنا ہے, اسی طرح آج ہم صرف یہ ارادہ کر لیں کہ ایسے قوم ہم صرف اس چیز کی ہم پرداری کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ سوسائٹی پہ آئے گا. زبردست زبردست, بہترین. نہیں تو بٹھاؤں تا بریک ہیں, جلدی حاضر تا تھے. رنگ
में तव्हांखे भली कार कंदासीं रंगन भरी शाम में। तव्हां ॿुधायो सर त नज़ीर साहब सां गॾु तव्हां कहिड़ा कहिड़ा प्रोजेक्ट कया हुया? मुंहिंजो पहिरियों ड्रामो हुयो न्याणी निमाणी जे नाले सां, मुंहिंजो उहो पहिरियों स्टेज हो। अच्छा, नज़ीर साहब उन में कैरेक्टर कयो, मुंहिंजो हिकु साइड कैरेक्टर हो, 2-3 एंट्रीज़ हुयूं, पर नज़ीर साहब खे सुठो कैरेक्टर हो, उन ब्रदर जो कैरेक्टर कयो। अक्सर नज़ीर साहब जा विलियन जा कैरेक्टर हूंदा, हू वॾेरे जे कैरेक्टर में ॾाढो सुठो लॻंदो हो, सही। गेटअप हुनजो अहिड़ो हो, ज़ाती ज़िंदगी में बि ईअं ई लॻंदो हो। पर मूंखे जेको उहो पहिरियों दफ़ो मूं हुनखे ॾिठो, उन भाउ जे कैरेक्टर में जेको किरदारु कयो, एॾो नफ़ीस ऐं एॾो संजीदा ऐं क्लासिकल कैरेक्टर हुन कयो, उहो ॾाढो पज़ीराई हुन माणी। ऐं मूं हुनखे वरी पहिरियों दफ़ो मां भाउ जे कैरेक्टर में ॾिठो, न त मां हुनखे हमेशह वॾेरे जे कैरेक्टर में ॾिसंदो हुउसि। उनखां पोइ असां हिकिड़ो ड्रामो कयो हुयोसीं, उहो शादात कोट में हिकिड़ी सिनेमा आहे, निशाद सिनेमा में, उन ड्रामे जो नालो जन्नत जंहिंजी जाइ। अच्छा अच्छा, उहो उनजो डायरेक्टर डॉक्टर GGM हुयो ऐं RKK ॿिन्ही गॾिजी डायरेक्ट कयो उनखे। उहो ड्रामो हिकिड़ो अहिड़ो हो जो शादात कोट जी तारीख़ में ईअं हो त उहो 3 फीमेल्स एक्टर हुयूं उन में, छाकाणि त इन खां अॻु में जेका ड्रामनि जी तारीख़ रही उन में फीमेल्स हुयूं कोन। पोइ शहीद नज़ीर अब्बासी वारा या शहीद नज़ीर लगारी वारा या अहमद नवाज़ अब्बासी या ॿिया जेके सीनियर दोस्त हुया, उन्हनि इहो ट्रेंड आंदो त छोकिरियूं आर्टिस्ट आणजनि ऐं वरी ड्रामनि जी हिकिड़ी नई तारीख़ ठही, न त उते जेके मेल बि कैरेक्टर कंदा हुआ छोकिरियुनि जा। अच्छा, ऐं पोइ वरी इहो पहिरियों ड्रामो शादात कोट में अहिड़ो हो जिन्हनि में 3 फीमेल एक्टर हुयूं, उन में ॾाढो रश थियो, माना हेठि मथे सिनेमा सॼी भरियल हुई, ॿाहिरां माण्हू बीठा हुया, हिक ॿिए खां पुछनि पिया त को वठी वञे अंदरि। पोइ इतफ़ाक़ अहिड़ो थियो उन ड्रामे में न 2 फीमेल एक्टर कोन आयूं। अच्छा, वरी उन्हनि नंढनि नंढनि शहरनि में ईअं बि हूंदो आहे त अलॻि अलॻि जेके क्लब्स आहिनि, हिक ॿिए जा लिकी लिकी बि ड्रामा ॾिसंदा आहिनि, किन सां इख़्तिलाफ़ हूंदा आहिनि त सिधो सो न बि वेंदा आहिनि, ॾिसूं त हीअ छा था कनि। अहिड़ी रीति उहे डायरेक्टर हिक ॿिए जा ईअं ड्रामा बि ॾिसंदा हुआ। 2 फीमेल एक्टर जो न आहियूं त उहो ड्रामो त ठुप फैलाप थी रहियो। असां अंदरि वेही उते ई उते अधु कलाक में हुनखे एडिट कयोसीं, हिकिड़ी छोकिरी ते कीअं हलाइणो आहे, ऐं उहो ड्रामो कयोसीं जेको 3 कलाकनि जो असां मुंहिंजे ख़्याल में 1-1.5 कलाक में। अच्छा, वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उन में जेको मुंहिंजो कैरेक्टर हो, उहो मुंहिंजी एज मुंहिंजे ख़्याल 20 या 25 साल ताईं हुई, पर मूं नाने जो कैरेक्टर कयो। ऐं माना जब मूंखे जेके उते ॾिसनि पिया त उहे ॿाहिरि वरी चवनि पिया हीअ आहे, माना बिल्कुलु अहिड़ो गेटअप हुयो उहो, मूंखे ॾाढो मज़ो आयो। पर उहो फैलाप जो थियो त उहो एतिरो मज़ो हुन में न रहियो ड्रामे में। पोइ नज़ीर साहब मूंखे हुन में ॾिठो, ऐं हुन नज़ीर साहब जी ज़ाती ज़िंदगी जी उनजी फील्ड अलॻि हुई, मुंहिंजी अलॻि हुई, असां हिक ॿिए खां परे परे हूंदा हुआसीं, इन्हनि ई ॾींहंनि में मिलंदा हुआसीं, को ड्रामो आहे या को प्रोग्राम आहे त पोइ सभु गॾिबा, या दिल्ली या बेदिली बि सभु एक्टर उते ईंदा हुआ। मतिलबु पोइ नज़ीर साहब पाण मूं वटि आयो, उहो एॾो वॾो माण्हू हो, एॾो वॾो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, ओॾीमहिल उन ई दुनिया में माना इहे ई 2-3 दोस्त हुया, मूं वटि आयो, मूंखे चई यार हीअ कहिड़ा ड्रामा थो करी, जेको तूं अचु मुंहिंजे ड्रामे में कमु कर यार, हे सॼो फैलाप हीअं थी वियो हूअं थी वियो। पोइ मूं हुनखे सॼी कहाणी त ॿुधाई, पर हुन माना हिकिड़ो अहिड़े ख़्याल में चयो त माना अहिड़ा ड्रामा जेको आहे न तव्हां हिन में न कयो कमु, जेके अहिड़ा थियनि था। पोइ मूंखे उहो वठी वियो, कास्ट कयईं पंहिंजे ड्रामे में, मुंहिंजो कैरेक्टर रखियईं। उहो जेको ड्रामो उहो चाग भिटाई घोट, जिन में मूंखे वठी वञी हुन कैरेक्टर करायो हुयो, उहो ॾाढो भलो ड्रामो थियो उहो बि। पर मूंखे ख़बर न हुई त इहो कॾहिं थींदो, हिननि खां रिहर्सल बि शुरू करे छॾी, ऐं मां वरी पंहिंजी दुनिया में, मूंखे ओचितो हिकिड़े ॾींहुं वरी जेको आहे न फ़ोन वोन जो बि को सिलसिलो अहिड़ो कोन हो, मिलियो त यार असांजी रिहर्सल हले थी, हाणे उस्ताद नज़ीर लगारी ऐं मां हुनजे अॻियां जेको आहे सो कुझु बि न जहिड़ो कर। उन दौर में मूंखे 2 स्टेज कयूं हुजनि, डायरेक्टर मूं ॾे अचे, तव्हां हलो मूंसां कमु कयो, त माना मुंहिंजे लाइ त इहा वॾी ॻाल्हि हुई न, मूंखे पघर अची विया। पोइ मां फटाफट राति जो ई वञी रिहर्सल में जेको आहे पहुतुसि। पोइ मुंहिंजे ख़्याल में 3-4 ॾींहं बाक़ी बचा हुआ, पर उहो कैरेक्टर मुंहिंजे लाइ पियो हो, त माना इहो मुर्तज़ा खे करिणो आहे। त उहो बि यादगार ड्रामो थियो, मतिलबु ॾाढो तमामु सुठी महिनत हुन कई नज़ीर साहब। हुनजा ॿिया तक़रीबन सभई सुठा ड्रामा थिया, जेतोणीकि न्याणी निमाणी में मुंहिंजो पहिरियों कैरेक्टर हो, त उहो डायरेक्शन जेको आहे डॉक्टर GGM जी हुई, उन्हनि जी डायरेक्शन में नज़ीर साहब कमु कयो। पर जेका हिन जी पंहिंजी डायरेक्शन हुई उहा ॿियनि डायरेक्टरनि खां इलाही मुख़्तलिफ़ हूंदी हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तव्हांजा हींअर कहिड़ा कहिड़ा प्रोजेक्ट्स अचण वारा आहिनि, ऐं तव्हांजो स्टेज ड्रामो वो कहिड़ो हुयो जेको तमामु घणो फेमस थियो ऐं तव्हांखे इलाही शोहरत मिली उन्हनि में? जी, मुंहिंजो
मूं असल में 2009 में पहिरियों नाटक कयो हो, अच्छा, पोइ वरी आउं हिकिड़ी गवर्नमेंट जॉब में हलियो वियुसि, हुनजे करे 8-10 सालनि जो गैप अची वियो, गैप अची वियो, सही, यानी 2009 में वरी ॿियो 2011 में, उन खां पोइ मुसलसल वरी मां 2024 में वरी कंटिन्यू कयो आहे, 2-3 सालनि खां वठी। त गुज़िरियल साल 2025 में असां नाटक कयोसीं शादाब, जंहिंजो ज़िक्र आउं थोरी देरि पहिरियां मूं कयो, जी, उन हिकिड़ो फेम ॾिनो ऐं अच्छा, उन में महिनत बि असां घणी कई असीं। जदीद नाटक जी टेक्निक ते असां उहो ड्रामो पेश कयो हो लाड़काणे में, ऐं हिकिड़ा फिक्शनल कैरेक्टर्स हुआ ऐं उहो ॾाढो हिकिड़ो ख़ूबसूरत थियो। फ़हीम भुट्टो मूंसां गॾु हो पेयर में, अपोज़िट में, ऐं छोकिरी रमशा ज़बरदस्त एक्ट्रेस आहे असांजी, आगा ज़फ़र पाण राइटर बि हुन में हो, ॿियो सुहिणी सिंधी कैरेक्टर, 5 कैरेक्टरनि ते ड्रामो हो, पर ॾाढो शानदार। ऐं उन ड्रामे मां एक्सपेक्ट इहो न पियो कयो वञे त हीउ को एॾो, छा त फेस्टिवल जॾहिं असां वटि थींदा आहिनि, ख़ासि तौरु लाड़काणे में, उते ॾाढो मुनज़्ज़म ड्रामो थिए थो। सॼी सिंध में मूं ॾिठो आहे, कराची जा ड्रामा मूं ॾिठा आहिनि, हैदराबाद जा बि, सखर बि, ऐं सिंधी ॿियनि शहरनि में। लाड़काणे वारनि खे इहो आउं इहा जस ॾींदुसि त उहे मुनज़्ज़म अंदाज़ में ड्रामो पेश कंदा आहिनि। ऐं फेस्टिवल हिकिड़ो रंगारंग उते तक़रीब हूंदी आहे, ऐं डिसंबर में थियो, सियारे में। असां जॾहिं रिहर्सल ते उते आयासीं 2 ॾींहं अॻु में, त असां ईअं घुमंदा पिया हुतऊं, बसि एॾो वॾो ड्रामो जेको आहे उहो असल में स्क्रिप्ट उहे पढ़ाया विया हुया, जेके स्क्रिप्ट हुन में जमा थिया हुआ, उहे स्क्रिप्ट पढ़ाया जॾहिं विया त उहो नंबर 1 ड्रामो काउंट थियो हुयो शादाब स्क्रिप्ट्स में, यानी स्क्रिप्ट नंबर 1 आहे। हाणे ॾिसूं त पेश कीअं थो थिए। जॾहिं असां उते प्रयासीं पिया, हुननि जो रिहर्सल कयो था, हीउ एॾो वॾो नाटक आहे, तव्हां एतिरो निभाए कोशिशि कंदासीं, ऐं उहो ईअं ई थियो। उहो ॾाढो शानदार अंदाज़ में नाटक पेश थियो, ऐं आख़िर ताईं उहो थिए ईअं पियो त हुन खां 3 ड्रामा अॻु में थिया हुआ, ऐं ऑडियंस जेका आहे उहा उथी वेंदी हुई, यानी अधु ड्रामे खां पोइ। पर उन ड्रामे में मुसलसल माण्हू आख़िर ताईं वेठा रहिया, ऐं हिकिड़ो शानदार ड्रामो। इहो बि तव्हांजो पंहिंजो ई लिखियलु हुयो? न, इहो आगा ज़फ़र साहब जो। आगा ज़फ़र साहब जो। मूं जेको ड्रामो लिखियो आहे उहो लिखियो आहे, 2 ड्रामा लिखिया आहिनि, हिकिड़ो हुन में पेश थियो हुयो अखि उल्टी धार जे नाले सां। अच्छा, उहो हुन ड्रामा फेस्टिवल में जेके स्क्रिप्ट्स पढ़ाया विया हुआ स्क्रूटनी में, उनमें 2nd नंबर ते मार्क्स हुन खयो हुयो, जेको लिखियलु हो। ॾाढो शानदार सब्जेक्ट आहे, उहो असां 2 दफ़ा पेश करे चुका आहियूं हुनखे, शादात कोट में बि ऐं लाड़काणे में बि। उन में ज़ाहिर आहे रिश्ता ऐं समाजी दग जेको लतीफ़ साईं ॾिए थो पियो, अखि उल्टी धार वारो, उनखे जदीद दौर सां कोशिशि कई अथमि, तां खणी आयो आहियां। ॿियो नाटक जेको मूं लिखियो आहे, उहो लिखियो आहे सिंधू पहिरें सुञ जे नाले सां। असां वटि इंडस डेल्टा जो जेका सूरत हाल आहे, पाणी नथो पहुचे, उहो हिकिड़ो केस आहे, यानी मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जो इहो ख़्यालु आहे त शायदि इहो पाणी ज़ाया थिए थो डेल्टा में जेको असीं मोकिलियूं था, तंहिंजे करे डैम ठाहियो ऐं जेको आहे सो कैनाल ठाहियो, पाणी ज़ाया था करियूं। पर मूं ड्रामे वारे अंदाज़ में उनखे कहाणी में पेश कयो आहे त इहो पाणी ज़ाया नथो थिए, असांजी ज़िंदगी आहे उते, ऐं उहा कीअं ज़मीन गिड़काए थो पाणी, ऐं उतां जा माण्हू कीअं उन ते सर्वाइव कनि था, पूरी उहा मूं हुन में ड्रामाटाइज़ कई आहे। ज़ाहिर असांजो कमु आर्ट, जॾहिं आर्ट में तव्हांखे पेश करिणो आहे त मुंहिंजी कोशिशि इहा हूंदी आहे त तव्हां पंहिंजा मामला जेके समाजी मसइला आहिनि, हा, ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त ॿोली उतां जी आहे, उहे जेके माण्हू ॻाल्हाईंदा आहिनि उते डेल्टा जा माण्हू, कारो छाण जा ऐं उन इलाइक़े जा माण्हू, उहो मूं रिसर्च कई। छो त मुंहिंजी हूंदी आहे कोशिशि त जेको बि तख़लीक़ी कमु करियां हुनजे पुठियां तहक़ीक़ ज़रूरु हुजे। मूं उहा तहक़ीक़ कई, उहो मुख़्तलिफ़ जेके उतां जा नुमाइंदा रिपोर्टिंग था कनि, इवन KTN जा बि, उन्हनि जूं मुख़्तलिफ़ रिपोर्ट्स मूं ॿुधियूं त हीअ कहिड़े लहजे में ॻाल्हाइनि था। ज़ाहिर आहे जॾहिं तव्हां फिज़िकली नथा वञी सघो त शयूं कीअं तव्हां उनखे एक्सट्रैक्ट कंदो तहक़ीक़ करण में, इहे सेखारियूं वेंदियूं आहिनि असांखे। त पोइ उहे शयूं मूं उतां कयूं, ऐं कुझु उतां जे माण्हुनि सां मूं मुलाक़ात कई त हिननि शयुनि खे तव्हां छा चवंदा आहियो। अच्छा, हा, माना पोइ उहो सॼो हुन में हिकिड़ो कुझु आहे यादि, कोई डायलॉग जेको तव्हां पंहिंजी उन लैंग्वेज में असांखे ॿुधाए सघो? डायलॉग हींअर मूंखे हुन में यादि कोन्हे, पर इहो आहे त हुन में थोरो एक्सेंट असांखे ॿुधायो। सिंधू सां जेको आहे सो हुन सां इश्क जी ॻाल्हि आहे, ऐं हुनजा मूंखे हींअर ज़हन ते को डायलॉग नथो अचे, पर उहो ॾाढो शानदार आहे। जॾहिं हिकिड़ो पेश थियो त थी सघे थो हुनखे टेलीवाइज़ बि कयां, TV ड्रामे ते पाण हुनखे आणियूं, इंशाल्लाह। पर मूं तव्हांखे ॿुधायो थी 2 मूं ड्रामा लिखिया आहिनि, ज़बरदस्त। ऐं एज़ एन एक्टर आउं 7 खां 8 ड्रामनि में कमु करे चुका आहियो। ऐं मतिलबु इन फ्यूचर छा आहे प्लान? हा, फ्यूचर इहो आहे त आउं हींअर नज़ीर साहब जी ज़िंदगी खे ड्रामाटाइज़ पियो कयां। हुननि जी शख़्सियत ते मूं किताबु लिखियो आहे, जेको थोरे ई वक़्त में मुर्तज़ा साहब जी पब्लिकेशन जे थ्रू पब्लिश थींदो, पर छाकाणि त मुंहिंजी फील्ड आर्ट आहे
तंहिंजे करे आउं चाहियां थो त हुनजी जेका पर थोड़ी हेजिटेशन न थी त पंहिंजे बाबा जी बायोग्राफी उनजी हिस्ट्री उनजो कमु तव्हां पाण लिखो था त हा, थोड़ी hesitation- मतिलबु थींदो आहे न त का शइ मिस न थी वञे। हिकु त हेज़िटेशन बि थी ऐं ॿियो इहो थियो त मूं काफ़ी टाइम हुनखे हाणे जेको मां किताबु लिखां पियो हुनखे 7 खां 8 साल थिया आहिनि। ऐं इंटरनेशनल रिलेशन्स में MPhil मां आहियां अच्छा अच्छा ज़ाहिरा। माशाल्लाह गुड। त मुंहिंजो कमु तहक़ीक़ आहे, रिसर्च आहे। मूं नज़ीर साहब जी ज़िंदगी खे हिकु हा, उहो मुहक़िक़ त जी हैसियत में ॾिठो आहे, obvious, हा। यानी हुनजे पुट जी हैसियत में न। ऐं पोइ वरी उहो वेरीफाई कयो अथमि हुनजे हम असर दोस्तनि खां त हीअ जेका तारीख़ मूं गॾु कई आहे त हिन में को वधाउ न हुजणु घुरिजे सही। ऐं जेका दुरुस्त आहे उहा हुजे। ऐं हुनखे एज़ अ रिसर्चर मूं ॾिठो आहे त नज़ीर साहब कीअं एक्टर कीअं हो, डायरेक्टर कीअं हो, माशाल्लाह हिकु पुट जी हैसियत में न। ऐं ड्रामे वक़्तु बि ईअं ज़ाहिरा छा आहे त तव्हां प्रोफेशनल राइटर बि आहियो। मज़ो तॾहिं आहे जॾहिं तव्हां पंहिंजे हुन शइ खे दफ़न करे ऐं हिकिड़े राइटर जी हैसियत में तव्हां पंहिंजे वालिद साहब जी उहा कहाणी लिखो था जेका हिकिड़ो आम राइटर बि लिखंदो हुन लाइ मसइलो आहे। वाकई सो हिकिड़ो चैलेंजिंग कमु ज़रूरु आहे पर कोशिशि करियां थो त इंशाल्लाह, उहो हिकिड़ो स्टेज कजे छो त उहो स्टेज जो आर्टिस्ट हो ऐं हुनजी ज़िंदगी आर्ट हुई त हुनखे ट्रिब्यूट बि आर्ट जी सूरत न में न वाकई बहितरीन इहो हिकिड़ो सुठो स्टेप आहे जंहिंमें इंशाल्लाह अल्लाह साईं तव्हांखे ज़रूर आमीन, कामयाब thank कंदो। you। सर आप हमें ये बताइए कि जैसे गवर्नमेंट है और निजी शोबे जितने भी हो गए आवाम के लिए इन फ्यूचर या आगे जाकर क्या कोई रिलीफ प्लान ला रहे हैं? देखें, आपको पता है कि अगर हम बहसत कौम सरकार की तरफ देखें तो सरकार हुकूमत पाकिस्तान एक IMF के प्रोग्राम के अंदर है और जो मुल्क भी IMF के प्रोग्राम में होते हैं वो अपनी आवाम के लिए चाहते हुए भी कुछ फला का काम नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के पाबंद हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर अब जो लोग बैठे होते हैं जो साहब इक़्तिदार हल्का है वो चाहता है कि वो आवाम को रिलीफ दे बट उनके हाथ बंधे होते हैं। तो जब तक हम इस कशकोल को नहीं तोड़ेंगे, हम मांगने वाला हाथ लेके दर दर जाएंगे तो फिर हमारी यही हैसियत रहेगी कि हम चाहते हुए भी अपने कौम को कोई रिलीफ नहीं दे सकते। तो हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। आज तकरीबन 80 साल हमें आज़ाद होने जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि बहसत कौम हमारे अंदर एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट का एलिमेंट आना चाहिए कि हमें अपनी अपनी ज़ात में रहते हुए इस पाकिस्तान की इकॉनमी को इस तरह कंट्रीब्यूट करें, इसको इतना मुस्तहकम बनाएं कि हम ये इस कशकोल से हमारी निजात हमें छूट जाए। अब उसके लिए ज़रूरी जो अमर है वो ये एक तो ये कि हम एक लोगों अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको हुनरमंद बनाएं, उनको एंटरप्रेन्योर बनाएं, उनको इंडस्ट्रीज़ लगें इस मुल्क में, एक्सपोर्ट्स होंगी, ज़र मुबादला आएगा इस मुल्क में तो ये पहिया चलेगा तो सिलसिला जो है वो बनेगा। उसके लिए पहले बॉर्डर्स तो खुल जाए सर। जी, बॉर्डर्स का खुलना बड़ा अहम है। मैं इससे कोई दो राय नहीं है कि अगर हम अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ अगर ट्रेड नहीं कर रहे तो ये हमारी बदकिस्मती है। एग्जैक्टली यही है। और ये भी तो देखें ना कि जितने भी छोटे कारोबार करने वाले हैं उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है ये। बड़े कारोबार करने वाले तो चलें जैसे तैसे करके मुंह दे देते हैं, छोटे कारोबार करने वाला क्या करे? जिसने कल स्टैब्लिश किया आज उसके लिए बॉर्डर बंद हो गया, वो क्या करेगा? देखिए, हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं पैदा कर रहे। अगर आप मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड ये सब हमारी तरह के ममालिक थे, अब हमसे आगे चले गए हैं। सर हम बांग्लादेश और श्रीलंका का ही एक मिसाल ले लेते हैं। तो वहाँ पे 22-23 साल की उम्र में लोग बच्चे बिलियनर्स बन गए ड्यू टू दिस टेक बिजनेस एंड ड्यू टू IT बिजनेस। हमारे यहाँ भी हमें अपने बच्चों को उस डगर पे डालना है कि यार नौकरियाँ ना सरकार के पास है ना प्राइवेट सेक्टर में, आप खुद अपने सेल्फ जो है वो करें, एंटरप्राइजिंग बने ताकि आप मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने लिए एक फॉर्चून बना सकें। ये जो अभी आपने बताया छोटे कारोबारी हल्कों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से फेडरेशन के तर्जुमान के हैसियत से ये ओपनली बताता हूँ कि हमारा यहाँ जो बैंकिंग का निज़ाम है वो SMEs को सपोर्ट नहीं करता। वो छोटे और दरमियानी दर्जे की इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करता, वो छोटे कारोबार को सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए सबसे आसान काम ये है कि वो सरकार को पैसे लोन देता जाए और सरकार नोट छाप के उसको वापस करे और वो अपने मुनाफे अरबों रुपए के बनाए।
اصل بینکنگ ہی یہ ہے کہ ایس ایم ایز کو آپ سپورٹ کریں, وہ انڈسٹری Follow کاٹیج کریں انڈسٹری اس کو, لگے گی, ہاں. گھر گھر میں روزگار لگے گا, وہ ایک بندہ جو ہے 10 لوگوں کو روزگار دے گا تو سسٹم چلے گا. اور بدقسمتی سے ہم اس پہ نہیں چل رہے, اور یہی وجہ ہماری جو ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ وہ سلسلہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے. بنگلہ دیش کی آپ نے مثال دی, بنگلہ دیش میں یہ کاٹیج انڈسٹری ہے جس نے بنگلہ دیش کو کی جو معیشت کو ایک چٹان بنا دی ہے, جہاں 45 ارب ڈالر کے ان کے ریزروز ہیں آج. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی انڈسٹری وہاں, اور خواتین کو انہوں نے امپاور کیا. بالکل. آپ یقین کریں وہاں ہر دوسرے گھر کی خاتون کام کر رہی ہے, اور وہ کام کر رہی ہے اور اپنے گھر کو بھی پال رہی ہے اور اکانومی بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو یہی کام خواتین ہمارے یہاں 51% ہیں, مگر انفارچونیٹلی ہم خواتین جو ہیں وہ اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی اکانومی میں جس طرح وہ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں وقت آ گیا کہ پاکستان میں بھی ہر خاتون جو ہے اس کو, جو چاہے وہ دیہی علاقوں میں ہے یا شہری علاقوں میں, ان کو اپنی اپنی جگہ ان کو کام کرنا چاہیے, اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. زبردست, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. اور لاسٹ میں کوئی میسج؟ دیکھیں جی, میں تو آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک تو سب ہمارے جو پاکستانی بھائی بہن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ یوم پاکستان کو شائنہ شان طریقے سے بنائیں, مایوسیاں اور نا امیدیوں کو ایک طرف رکھیں, مثبت پہلو دیکھیں اس ملک کا. اس ملک کا ایک بہت بڑا مثبت روشن خیال چہرہ بھی ہے, اس کو بھی دیکھیں. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے, ہمیں وہ آنکھ چاہیے جو اس کو ہم اس کی قدر کر سکیں. اور میں نوجوانوں کو بالخصوص جو اثاثہ ہیں اس ملک کا, میں ان کو کہوں گا کہ خدا را آپ پاکستان سے بددل نہ ہوں. اس ملک میں بے انتہا پوٹینشیل ہے, آپ اس ملک میں رہ کے بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو صرف نا امیدی سے دور رہنا ہے, اور جیسے بھی حالات ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ مشکل حالات ہیں, نامساعد حالات سے گزر رہے ہیں, مگر یہ جو مشکل وقت ہے یہی آپ کو کندن بنائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. तव्हां पंहिंजी आर्ट लवर्स खे, यूथ खे छा मैसेज ॾियणु चाहींदव? आर्ट लवर्स खे त इहो पैगाम आहे त उहे आर्ट सां प्यार कनि. आर्ट असांजी सकाफ़त आहे, असांजी मिटीअ में शामिलु आहे. ऐं यूथ खे आउं शेर में पैगाम ॾींदुसि, चौसठिरो तव्हांखे ॿुधायां थो पियो त मतारो थी हले थो कूड़ ऐं कमज़ोर सच आहे. मतारो थी हले थो कूड़ ऐं कमज़ोर सच आहे, त ॾाढे सां सदा बीहण रही छो रीत पंहिंजी आहे. ॿुधी छॾ ॾाढ केॾो बि हुजे ॾाढो, मगर तूं मां हुजूं इनकार ते क़ाइम, त आख़िर जीत पंहिंजी आहे. वाह वाह, बहितरीन बहितरीन, ज़बरदस्त. जी, तव्हां कोई मैसेज ॾियणु चाहींदव? नौजवान जेके लिखनि था एज़ अ पोएट आहिनि, एज़ अ स्टोरी राइटर आहिनि, नॉवल निगार आहिनि, या जेके मौक़े तहक़ीक़ जे पासे अचणु चाहिनि था, उन्हनि लाइ इहो पैगाम आहे त उहे महिनत कनि ऐं पंहिंजनि लिखणियुनि में, पंहिंजे शहर में उहो मयार पैदा कनि जिन्हनि खे को ॿुधे, को पढ़े ऐं दाद ॾिए, ऐं उन्हनि जूं शयूं समाज लाइ के कारगर थियनि, ऐं उन में के अहिड़ियूं शयूं हुजनि जेके माण्हुनि खे नए जज़्बे सां, नए रस्ते सां हलण जी जेको आहे सो ताक़ीद कनि, त इहो मुस्तक़बिल लाइ सुठो थींदो ऐं उहो पंहिंजी सुठी सुञाणप ठाहे सघंदा. ऐं उन्हनि शयुनि खे एतिरो जल्दी छपाइणु ऐं एतिरो जल्दी किताबनि जो ॻाणेटो वधाइणु इहो ज़रूरी न आहे. थोरियूं शयूं हुजनि पर उन्हनि में मायार हुजे त उहो ज़रूरु पंहिंजी जगह वालारींदा. ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच. शेर भाई, आपसे जाते जाते कुछ सुन लेंगे हम? धमाल. ठीक है, इंशाल्लाह. त तव्हां सां सुभाणे मुलाक़ात कंदासीं. तेसि ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो. मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. जंगल पहाड़ कहते हैं नाद अली, मुश्किल को हल करो मुश्किल कुशा अली.
हो तेरा सेवण रवे आबाद मस्त सोना लाल कलंदर तेरा सेवण रवे आबाद मस्त सोना लाल कलंदर तेरा सेवण रवे आबाद मस्त सोना लाल कलंदर 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 दुखियन दुख देना साडा ईमान नहीं मंगते को खाली दे जो साडा ईमान नहीं साडा ईमान नहीं मंगते को खाली दे जो साडा ईमान नहीं नारा लगा हुंदा हो नारा लगा हुंदा पैंदी ये धमाल मस्त सोना लाल कलंदर मस्त सोना लाल कलंदर मस्त सोना लाल कलंदर बोतला साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया तीवर बदले लाल सखी दे जो शहबाज नू आया अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मार के बोतला साईं जिस दम हांडिया दे विच पाया तीवर बदले लाल सखी दे जो शहबाज नू आया बोतला किथे तू आजा 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 नैयो भजदा वाली